Try again. All right, so I think we are live. That's good, 9:07. Let me just get a couple of more things going. Get my system going. Okay, audio's okay here. Audio's okay. Okay, good morning, everybody. Wednesday, June 11th, 9:08 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com, in person as well as online. Quickly take a look at first what happened today. Forex Factory, core CPI, and the numbers are very tight, CPI and CPI year over year. So inflation data came out. Now the next important news for anybody trading crude oil is 10:30. But 1 and 2 o'clock, we have the bond auction as well as we have the federal budget. So just watch out around there. Because of the spike, we have already done R1, R2, R3 already are done. Very close to R3. So let's take a look at what the numbers are first, and then we'll decide which way. Most likely high to go low. So today we have base is up, pressure is down. Base is up, pressure is down. Our strike price is 650. Okay, today is 650. And now we have CPI / China is the event. The deal is still going, and Trump posted volatility news that today is we are going to open up trades with, that's what Trump said, the Chinese tariffs may go down to 10%. But it's okay. We go whichever where the smart money goes. So last night's high, where is Nasdaq? 22,106. 22,000. And if you saw this was yesterday's area of expected high. So even if you shorted there, you're done. Yesterday's area was expected high of, so then the low was 21,865. So 241 points spike for the whole night. Where are we right now? 22,000. So we are very close to our pivots at the moment. But price shot up to 22,106. So we're R2 is done for Nasdaq. So high to go low most likely will work today is no worries. We'll go from there. So night session high is 22,106, very close to R3. And for ES, we have a night high of 74, which is very close to expected high. That was 78. So expected high is still valid. We will worry about it when price gets to 78 to 92. That's our number. Basar. We wait now for the price. So we wait for 78 for ES, and Nasdaq we wait for 150. 22,150 will wait for that. And, that's about it. Let me double check. It most probably we wait for 6078 for ES, right? For short, for area trade, is shorting. So it may go down after that, then we can sell. May, yeah. So we just sit and wait to see where it lands, how the market reacts when it opens officially, the stock market, because Tesla is back up to quite a bit. Tesla is up to $335. And yesterday Tesla was 316, today is 335. If I had held my shares, but quite a bit. So night high for ES is 74, and your
Nasdaq is 22,106. So let's keep this number on the board to keep an eye. So you have ES 6074, and that's the low side. We have 6021. 6021. So that's the range for the night trade. Night session high, night session low. Nasdaq, we were looking at 22,105, let's say, and 21,865. Is that the number? It's, yeah. So this is the Nasdaq night session low, night session high. High to go low is the plan. So I'll wait now for 150 and higher before I make a move. 742. So 22,160. Yeah. Six 6056 and 20. So right now the price is above R2 on Nasdaq, yes, and inside R2 for NQ. ये वाला स्पाइक इस उसमें लो प्रॉफिट लो करके ये वाला स्पाइक है ये तो है ये ना ये हाई है ना it's less so right now there's a good chance by so look for buy. You're finally seeing 22,000 number after a long time. Yeah, we price 930 mid line super खुली. Oh, मतलब ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी. Yes, I don't know. There's a possibility this can go spike up expected high and then go down. So when it does that, you can look for buys. But you will be signaling it. So mother, you were saying it at 9:30 when the market opens, it's going to shoot up. Maybe, but then I'm guessing. Guessing, right? Because and ये low है तो probably आज it can go above the high भी जा सकती है ना. Maybe. Surely नहीं बोल सकते. देखते हैं. लो था.
Okay, we'll just wait for Daniel's brief to see what is. कितने पॉइंट्स तक गिरा? 225. Why? So because okay, must say यहाँ it went down till See, perfect atmosphere. Literally touched it. touched accepted high. तो मतलब आपने यहाँ पे डाला होता 4192 पे, and then it went down till यहाँ. Yeah. तो ये है ना, ये स्पाइक है ना, हाँ. ये स्पाइक कहाँ से गया, ये गया यहाँ तक, Oh, yeah. यहाँ तक गया, राइट? तो 42925, so 42925 and 066. No, It's about 225. 26. नहीं ज़्यादा ही हुआ. 42066 207. and यहाँ 42926, 42926, 0410 140 points. Oh, okay. 43200 to down. हाँ, Reach. वही क्या ना 406 यहाँ तक. 4306 कहाँ से लेगा? 43200. 198. 198. So it's 297. Oh, and then 11. 43200 से लेके 42930 तक है. हाँ. So that's like 270. One second. We got As it? कह रहे कि Dow Jones पे करता तो it went down by 270 points. Yeah, times $5. Huh? Times $5. $5. Nasdaq is faster. Nasdaq is Five faster. Dow Jones is That slow. वो Nasdaq $220 का है क्या? हाँ. तो Nasdaq गया था 22,106 से 22,000 है. So 100 पॉइंट टाइम्स 20 वही 2,000. Issue is we have no idea how much it can move, so that's It's a the risk basically. yes. Nasdaq went from 22,100 till आपने क्या बताया next? 22,000 पे गिरी थी ना, 106 से गई है. हाँ, 22,000 तक गई है ना. हाँ, तो 106 पॉइंट है ना, ये जो स्पाइक आई है. So now I'm waiting for Nasdaq to go above 150 before I make a decision to go truly into the R3 area. I mean, expected high. So you're waiting for 150. 150. That is expected high. That's my plan. So it may go down after that. It may, but that's my Target. my first attempt to sell. Okay. Because R1 is done, R2 is done. Yeah, R1 is tested, R2 is tested. It actually broke even R2 Yeah. and went to 106. So the first alert I saw, the price around 8:22 a.m., it said it's heading to R1. And then 8:30, it says I'm heading to R2. And then 8:30, it says from R1, it jumped to almost expected high.
Yeah. You're talking about Nasdaq, right? Yes. Yes. So R1 directly to jump to expected high. One more thing I have to ask, sir, for Nasdaq, right? So it went till 2102. Yes. Lekin if it, how can we know that it's going to go down? It can still go up, right? Yeah. So वहां से लेकिन कंप्यूटर ने आपको कुछ रिस्क के मेथड्स दे दिए हैं ना, हमें तो इसमें कुछ ब्लाइंड होते हैं ना पूरी मार्केट। इसका मतलब है कि 22150 तक तो दिया है। यहाँ से आप सेल करेंगे तो ये अच्छी रेंज है। ओके। कंप्यूटर ये क्या एनालिसिस कर रहा है तो क्या? मैं सेट करता हूँ, हाँ, कितने पे सेट करना था? ये आपको टाइम के साथ पता लगेगा। वहां गई नहीं, 150 पे गई नहीं। वो तो 1040 हाँ, तो आपके जिसने 150 पे ऑर्डर लगाया था नहीं पिक हुआ। हाँ, तो that's why. So how you know कि मिड से नीचे जाएगी? There is no 100%. Basically you are just putting there and Putting your order based on it. So if it touches, it's okay. If it doesn't touch, yeah, but if it touches, it can still continue to break it, right? So, Yeah. but these analysis tools are giving us based on what has happened in 18 years and the last 1 year, last 1 week, last 1 month, and says if it goes there, then it's all sellers are gonna say this is oversold. All buyers are gonna say it's overbought. Okay. तो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर आपको प्रिसाइज प्रेडिक्शन देता है कि यहाँ जिस तरह आज अब 150 पे जाएगा, मैं रिस्क कर लूंगा सेल का, एंड दैट्स ऑल। So 150 say I will sell Nasdaq. Right. It's a risk again. It's always a risk. break and go. Oh yes, yes. But most people who are doing trading, humans trade कर रहे हैं ना, तो उनको मालूम है कि कौन सी जगह महंगाई हो जाती है। जिसने ट्रेड लिया उसने एग्जिट भी करना है, तो ये सारे वेरिएबल्स के बाद एक रेंज देती है। Okay. सिर्फ आपने ये देखना है कि 150 पे आपने लगाया, हाँ जी। कितना लॉस बेयर करना है। प्रॉफिट तो का मुझे नहीं वरी होता, मुझे होता है कि मैंने कितना लॉस लेना है। वो 150 से चली जाए 170, 180, 190, तो आपका अकाउंट $2 पर माइनस जा रहा है। लेकिन आप जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो आपने बताया था, व्हाट वी डू इज बेसिकली एक्सपेक्टेड हाई, जैसे 22150 से 2220 तक है रेंज है, जो 70 पॉइंट की रेंज लगाते हैं, एक ऊपर में लगाते हैं, एक नीचे वो माइक्रो लगाते हैं। यस यस। सो इन केस इट गोस अप स्टिल यू आर, लेकिन लेट्स से कि 3 भी हो गए और प्राइस 250 पे चली गई, 150 या मेरे 100 अगेंस्ट चले गई, तो आप क्या करेंगे? आपने पहले ये सोचना होता है मेरा रिस्क कितना है। मुझे $0 प्रॉफिट की परवाह होती है, मुझे सिर्फ होता है कि अगर यहाँ से प्राइस का ये हो गया तो मैं क्या करूँगा। अब उन्होंने 72 पे लगाया ऑर्डर, ठीक है, एरिया 78 था, उन्होंने चलती गाड़ी से ट्रेड लिया। वो अगर 72 से वो 90 चली जाती तो उनको उसकी स्ट्रेस है, उनको ये नहीं स्ट्रेस के 72 पे लगाया और वहां से आ गई। प्रॉफिट की स्ट्रेस नहीं, लॉस की स्ट्रेस। हमेशा लॉस की स्ट्रेस होती है, प्रॉफिट की स्ट्रेस हमें खाली इनको लॉस ही पता होता है। हाँ, हमें प्रॉफिट तो यू नो। सो अब उन्होंने लिए कुछ पॉइंट, चलती गाड़ी से मैंने ले लिया, मैंने मार्केट दबाई तो वो 65 मिली मुझे। हाँ जी। 65, मैंने उसको क्लोज किया जाके 56 पे, तो चलो यार कुछ पॉइंट आ गए, 5 माइक्रो से। तो सर एक स्किप कर देंगे, स्किप। इवन आप मिड बैंड लेते हैं, मिड बैंड के अंदर एक कैलकुलेशन है कि वो है कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया तो निकल जाए, मीन आपको इससे ज्यादा लॉस ना ले, राइट। सो एरिया वाले स्लाइटली डिफरेंट कैलकुलेशंस करते हैं। सो अभी सिर्फ और सिर्फ ये चाइनीज स्टॉक जो लगी हुई है ना, ये मार्केट को क्योंकि अब वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई आ गए नैस्डैक में, 22,450 नंबर है। हाँ जी। ये यानी कि हिस्टोरिकली जब से नैस्डैक खुली है 100 साल से, तो इससे ऊपर नंबर ही नहीं है। तो अब ट्रम्प की ये कोशिश है कि ये 22,450 ब्रेक करे। 22,400 एक्सट्रीम हाई की बात कर रहे हैं? नहीं, और जो कभी पीक है ना उसकी, वो 22,450 है पीक, उससे ऊपर कभी नहीं गई, कभी नहीं जिंदगी में गई। तो ट्रम्प चाहता है कि उससे ऊपर, उससे वो अब और कितना पीछे रह गया, सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट। तो 22,450 माइनस 22,150 तो 106 तो आज आ गया। हाँ जी। तो 344 पॉइंट रह गई है और इसने ऑल टाइम हाई लगा देना, which is today's extreme high. Which is today's extreme high, yeah. तो क्योंकि हमारा वो 430 तक रेंज दे रहा है ना, 430 और 450 के दरमियान है। तो सर हो गया 10% टैरिफ, अभी उसने ट्वीट मारी थी
इसी स्पाइक नहीं देखी वो, इन्फ्लेशन से ज्यादा उसकी स्पाइक्स का मसला है। वो कहता 55% से हम ले 10 कहाँ 250% टैरिफ और कहाँ पर 10% पे। Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Shri Akal. Hello guys. Microphone check. Hey, walaikum salam. Good morning. Manish. Kesh. Vikas. Good morning. Ranjit. Good morning. Habib. Manpreet. Good morning. Alpha Ji. Amir. Sunil. Good morning. Clifford. Hitesh. Good morning, Sakir, Mohsen, Islam, good morning, and Anil, good morning, everybody, good morning. Quick review of our disclaimer, guys. All material and Muslim are our service for our training floor not attended as the trading advice is just meant to enhance your trading decision, but not make it for you, and we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always give the tools. Always let yourself and always ready to accept your losses. And do what you see, don't do what you think. And treat this market the very first day you trade. And all the areas we have on our superareas.com or on our graph are not buy and sell or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only. And we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, beautifully, it went up. The numbers were highly manipulated. Numbers, inflation is high in US, even tariffs and everything is high, but they're showing numbers of less. But still, 100% Dow hit our expected high. 100% Russell 2000 hit our expected high. S&P shy just 4 or 3 points. Nasdaq shy quite a bit points from our expected high. Looks like somebody is watching our numbers and they're just selling before or huge selling before our area. But still, high to go low with the good strategy. 53 points for S&P 500, 240 points, 0.25 means one tick. Imagine it's just night session after 3 a.m. European session after European session. 240 points on our Nasdaq, 446 points on Dow, and Russell 2000 also gives us from 54 to 94 area, around 94 area. Means very nicely, almost close to like 40 points push to the upside. That's a big push to the upside. And now all markets are coming down. Nasdaq, if you look at the Russell 2000, Russell almost get back 80% of the push that we had. And same thing here. Remember, guys, price has to go down. The numbers are highly manipulated. In my opinion, my experience is telling me to give that full push and make potential next session a low area today. Overall, our S&P 500, our high was 60.78, and so far we got almost 75, 3 points and one tick. 78 to 92, 60, 78 to 92. Our low is 59.75 to 60. Nasdaq, our high is 22,150 to 22,220. Low is 21,620 to 550. Nicely bounced back from areas and prices coming down. And Russell 2000 almost gives back everything. And then we have British pound, 100% hit our expected high for the day and shoot to the downside. Look like somebody controlled the market and just hit area and shoot to the down. And Canadian dollar very close, just shy few ticks from our expected high for the day. And right now at PP area, just in between PP and R1 area. Actually today I posted area around 8 o'clock, 8:15. Everybody was done when first push. It hit our R1 area and bounced back down. And look at the euro.
absolutely hit our expected high for today and shoot to the downside. Crude oil at our expected high, hit our expected high, beautifully bounced back down. Just right now, almost 40 cents it came down. And crude oil should go further down and then push to the. Remember, in future, we are seeing crude oil will go up because they said in July will increase, will pump our production. But look like U.S. is against them, and they will put some sanctions if it increase oil production. And then we have FDAX. FDAX was down, came down, bounced back up, went to our expected high for the day this morning. It hit just 9 o'clock. See, 9 o'clock, it hit our expected high and shoot to the downside. Beautifully gives back almost 60% of the push that had from our after 9 o'clock. It gives back everything. Gold is up, gold is above BP, shoot to the upside and hit our 82 area. So far, I was expecting 3,400 area, and it just bounced back from 82 area, and just bounced back to the downside. And right now, copper, remember copper and capital copper and silver. If you remember, previously I told you they move in the same direction, but right now, the copper is in opposite direction. Copper hit our expected low for the day. And very nicely, 15 cents push to the downside from yesterday high and came down to our exactly 100% expected low for the day. And silver as well, very close to our expected low for the day. If you remember previously, I told you silver is too high, went to $37.03, and that was on our this Monday, the past Monday. And from Monday, it's just keep coming down. And today, our expected low was somewhere $36. I would say a little bit lower than that, 36. And it just paused and very close to our expected low. And hold by S2, the daily S2 area, hold it, and that's where right now, again, I'm expecting a diversion to the downside. Natural gas hit our yesterday low, 100% hit our yesterday low, 11 cents push to the upside on our natural gas, and 11 cents is big push to the upside on natural gas. Because $10,000 means $1,100 just bounced back up from our yesterday low area. And then Bitcoin and Ethereum. Bitcoin yesterday went up and then retraced back down. Not much retracement, $1,270. Right now, just sitting at PP. It's undecided. Bitcoin is fully undecided right now. And Ethereum, remember, I'm telling you guys, Ethereum has more push into the upside. You see, Ethereum 100% hit our expected high for the day yesterday. You remember 28? I was expecting 28.30, 28.20, hit our area, bounced back down $78 and then $67 right now. And Ethereum is above PP, above value area, and trying to break our yesterday high area. And Bitcoin as well. Bitcoin should break our 112,000 because 11,980 is the high right now for our Bitcoin. So both markets should go up, and especially Ethereum has more room to the upside. Maybe I'm expecting somewhere maybe August, September, it should break the highest high of Ethereum. Please guys say the areas. If you have any questions, you can call me or you can text me. I will be happy. All right, so this was the brief. High to go low. Most areas are done. Couple of mid bands are done. Coming down. SRES setup. Did we see that? 30-20 mid band shoot down.
Yeah, divergence is on ES 3020 mid-band 1510. So that white line is saying that mid-band could be riskier. So it's your strength is down. Yeah, so the color may change. But a huge spike from R2 to R1. R1 became base and went back up. So R1 acted as a support for both markets. So ES, I'm waiting for price to go to 6078 and higher. That's the ES, and Nasdaq 22,150 or higher before I go ahead and do anything. For those doing area trades. 607 expected high or 22,150. If you're done your trade, don't risk it again, China. It's video is pretty clear on YouTube. Incredible. What change? Which year? Nothing, right? Confirmations. The confirmation. Hi. Lekin it's going anything, right? It's because video is stuck in YouTube.
There you go. That got fixed. Okay. Back into R1. So the white line, telling you that mid-band could be slightly riskier. That's all. See what happens. So both markets have broken R1.
चल और नीचे लें, रुक तो सकती है लेकिन मैं प्रेशर डाउन है, 4 हफ्ते से मार्केट ऊपर है। Try R2. Sorry, Try R2 today. R2 is done Done. in the morning. Oh, I It's a good chance, huh? For getting chance, it's a really good chance. It's your house. doesn't be it. It's going up, right? 30-20, the strength did not go down. That's why it's moving up. Green आ गई ना? Went up, break कर दी. It's too volatile right now. उसको touch नहीं करना चाहिए. Wait. देखो इसलिए you have to wait for this to close below or once. हमेशा areas को ध्यान रखो. Always wait for the candle to close below. आप self and take there. Just left wick and bounce right back up. So कभी नहीं पता if it's going to respect this area. This the reason why it went up is because this candle like just rejected it. नीचे तक नहीं आई ना ये. So wait for this to close below and then when it comes back, then get another test. He follow below. You should wait for the candle. Wait for the next candle to go. Next one below आएगा तब then do And it. then Right? get in on the test. क्योंकि बिकाया है ना reject. The best thing would have been done. Wait for this red to close here. Then since this is 30 minutes, wait for the 10 o'clock candle. 10 o'clock candle ऊपर है, नीचे से. Then get on the test and then see. So you can just wig and react. See, look, it just came back and reacted. All right, shooting back up. Let's see. Q shooting back up fine. QC going to be break नहीं किया. Rejected. नीचे नहीं आई ना, क्लोज नहीं किया, ऊपर चला गया. Yes, we somewhat touching this. Back into our 2 area. So the other trade kill. 830 was the best.
चौक ने बंद कर दिया आते ये देखो ग्रीन आ गया था इससे बंद कर दिया ये देखो इसमें चल रहा है उसको इनको बोल सकते हो लोग उसको ले I cannot close the order. Yeah, it's gone into orange. If this orange is not a problem, just disconnect and reconnect. Okay. That will, if it order goes into orange, that means there's nothing to order. बीच में कुछ नहीं लास्ट टू फिर आगे Touched R2 again, and it's coming down from R2. next candle is down right सब कुछ लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ change ये पता नहीं है it's too low oh it's good after it's too low of a chart yeah reaction value Didn't touch mid-band quite. $48, $52. $52, $53.
Divergence again, but this time divergence failed. Touch midband, somewhat. MES touched, not ES. Right. So Nasdaq is 22,000 approximately.
Sitting for a second. Easy divergence are. They go down. A few minutes. वो एजेंट में आ गया फिर सुबह चला गया Double divergence. Another mid-band. Another mid-band passed, even after doing double divergence. Which stock is taking it up? Tesla is up 331. Wow. Broadcom is up.
Still wants to go higher. Just have to be patient, right? Just keep waiting. Back into R2. तो सर ठीक ठाक जी, आप सुनाओ। हाँ मैं बताएं, आप बुलनॉक्स में? अच्छा, आप डैशबोर्ड पे जाएं, वहाँ लिखा होगा पेमेंट 148, वो पे कर दें। दैट्स ऑल, वही पे करना और कुछ नहीं। What does it mean when the base is? Meaning price is opening above pivot point, PP, above pivot point, but pressure is down, meaning more chances are price should go down. Base just means. Above PP or below PP, that's it. Does it change throughout the day or? No, it's just that's the opening price. That's just the opening. When the market is slower, base open means it should go and test night session high. So our night session high today is 60784. So that's where the highest point it went to. So it should go and test it. Let's see. If it's below the PP, Then it will the go price in go to night session low. low and then test it. Test it. So I'm waiting for 78 to be. It's another not much left. 78 minus 53, about 25 points. Then it will get inside our expected high zone. And Nasdaq 150 points from here. Right now it's hovering at 22,000. I actually have a question about when we have an active order, like let's say we have like $300 and I have the index account. It's showing as closing 300. So limits already touched. Triple that. Correct. But 2 seconds later, it's showing me like 200 or 100. What happens is the way Apex calculates and all these funded companies is it's called live threshold. If you see 300 and you close at 200, it will deduct 100 from your threshold. So every Apex you have to exit with a limit order. So this is my entry, let's say 50, and you will exit at 53, you will get 100% of the money.
That's what I don't. So Okay, I only- but there's only just a commission. Just that's all they do cut in terms of there's a commission on each trade. Yeah. If you're doing 3 micro, 1 micro, 5 micro, but that's a, But the commission gets deducted at after every trade. After every trade. No. But I noticed there was like quite a few times, like 200, 300. You're not hitting close button, right? No. Okay. Limit order. Okay. Generally, what you can do is go. Are you using Tradeovate? Okay. You can go on Tradeovate's website and you can pick exact entry and exit, and it'll tell you the P&L. So log into Tradeovate. I'll show you how that's done. So 55 after the open to 20,000 and upper limit of R2 right now. So that's fine. So go top here, click here. Yep. And then you can click today's results. Press OK, go. Let's go. At the bottom, it tells you when you entered, what was their profit, what was the loss, everything you can do, like detail, break it down. So that will tell you where the issue is happening in terms of your entry or exit and things like that. All right, 55. So it's trying to break R2 one more time. ES above R2. बस that और 10 मिनट में आपका अकाउंट तैयार हो जाएगा रूल्स आपको बता दें कंफर्म हो जाए ना डाल दिया still it's hovering around, right? Can go down. Even 15 minutes देखिए 15 minutes looks good. Screen closed above. Broke it quickly. But still it's active. देखो next वाला जब आ रहा है. Yes, that's what. I'm concerned with the previous bar. As long as the previous door breaks it, I'm fine. I'll go for it. Stack back up to R2 almost close.
नहीं तो बोलना चाहिए अच्छा नहीं वो तो चल रहा है रिस्क थ्रेशोल्ड देखना है इसमें कैसे वक्त लगेगा चेक करना है आर ट्रेडर के अंदर आर ट्रेडर में खोलें अकाउंट बैलेंस माइनस ऑटो लिक्विडेट इज योर थ्रेशोल्ड तो लिक्विड जिसमें वक्त टेस्ट करते हैं $57 20 points left before it goes to expected high. हाँ नॉर्मल है नॉर्मल अब सपोज कल मैं 100 लॉन्च कर तो ये 25,600 हो जाएगा ये छोटा सा पॉजिटिव करते हैं ये 1500 ऊपर जाएगा आपको भाग लॉस में कम उसमें जाने जो भी आप विभिन्न कर रहे हैं सीमा अलग अलग 60-50 इसको इधर 26 से पा सकते हैं डेफिनेटली 65 ये पंद्रह महीने से 15 पर लेकिन अगर सब आपने 16 यूज कर दिया तो हो जाएगा ये 24,000 उसमें जो चेक करना है एक चाहिए इसमें हम बना रहे हैं डिस्काउंट क्लियर कर उसमें जीरो चाहे उसमें दूसरा अच्छा ये अपने बदल हाँ तो अब सब क्या हुआ मेरा कॉन्फिडेंस 25 साल अब ये पता चल रहा है अब मैं कल से 100 लोग सोचा ये चाहूंगा ये 25-600 लेगा ये तो आपका अभी सिलेक्शन ये राहुल सर अकाउंट नहीं क्या करते हैं अकाउंट बैलेंस माइनस ऑटो लिक्विडेट नहीं आपका अकाउंट बैलेंस क्या है अकाउंट बैलेंस का नंबर बताएं अब एंड पे जाएं आखिरी कॉलम ऑटो लिक्विडेट का नंबर बताएं एक नंबर है बिल्कुल राइट पे जाएं उसके बाद ये पहला जो इमेजेस है इसमें आपको और जब पोजीशन वाली
2500 है सर। नहीं, बकायदा ऑटो लिक्विडेट थ्रेशोल्ड लिखा होगा वहाँ, कॉलम का नाम है ऑटो लिक्विडेट थ्रेशोल्ड, वैल्यू होगी वहाँ 52,000 होगी, 50,000 होगी, 47 होगी। All right, we're almost in R2 for Nasdaq one more time. सबका 53,000 52,000 लिखा हुआ है, 52 या 53? ओके, सो मुझे एनी डेस्क दें आप, सही चीज। ठीक, 60 पे आ गया जी दोबारा। We're inside R2, officially on Nasdaq now. Let's pick up this number. जो अकाउंट बैलेंस है ये वाला उठाते हैं, ठीक है, 51272 माइनस ये ऑटो लिक्विडेट, ये वैल्यू है, ऑटो लिक्विडेट थ्रेशोल्ड है 49,572, तो आपके पास $1,700 इस अकाउंट में। हाँ जी, तो ये माइनस ये आपको बताएगा कि आपके पास अवेलेबल बैलेंस कितना है। Yeah, no problem. I've logged out. All right, we're 35, 37, 100 points left for expected high for Nasdaq. No problem. Let's see. Meta is up. Everything's ticked. 144. सर R2 तो पहले हो चुका है। हो चुका जी, मॉर्निंग में
अब सिर्फ R3 का 78 का नंबर वेट कर रहा हूँ यहाँ से दूर नहीं है like 78 minus 62 16 points left I guess 63 Nasdaq night high is 22,106 Do you already put the order in to sell at that number? yeah I'm planning to sell from 78 yes How much of a space do you give for this if it goes down? because what's the next number up let me double check 92 so it should like I have to wait I will enter with 5 micros or 3 micros and I'll decide how far it can it'll push against me Do you scale down as it goes down? no I'll just close the trades and with my 10 points 5 points so what I'll maybe do enter at 78 3 micros and then higher range another 3 and average in between if it touches 78 and comes down to let's say 70 I'll exit right so 5 points 10 points are more than enough so right now it is at 60 almost 3 Thank you so much, sir. no problem take care Uncle, I was looking into the Legends account, Mhm. and currently the 25,000 one. Yeah, no. What does the 165 a month mean? no we're gonna give over coupon code that is going to be $50 Will the coupon will work? yes don't buy more so it's 1/3 of a price $50 $50. so that's how much time you will pay $50 and that's you have a month to complete this test So does the month start when I buy it or when I place The- the first trade? no the moment you buy it When I buy it. Yeah. Okay. Otherwise, it's very expensive. it's 165 they just give you this retail price and then a discount price But Independence Day, maybe it will go down to like $33 legend doesn't go below 33 Yeah. but that's 50 is amazing deal. 50 is we find it expensive when you are paying 33 right so it's a little And you said once you pass the challenge, then you will pay 150 because in that stage 1 the stage 2 is real money so stage 2 they will charge you 10% of the risk so your risk will be 150 their risk will be 1350 if you lost the account in stage 2 you're only losing 150 and so that means the payout kicks in under second level, right? second So if we basically make a profit of $1,500, Yeah. then they give us the payout 90%, right? correct And but if you 10% they keep. Correct. Okay. Yeah. So in the stage 2, your risk is 10%, their risk is 90%. Stage 2, your profit is 90%, their profit is 10%. So but they will test you on stage 1 first, right? You have to trade 5 days at least. You have to trade for, it cannot go more than 450 in a day. So they will test quite a few things. that's the only test, right? That's the really, Stage 2, it's all real payouts. then. it's real payouts. Okay. Yes. The maximum is 1,500. 1,500 10 days, right? per 10 days. So every 10 days, they can give you a maximum of 3,000 per account. If you have 10 of these accounts, they will give you 30,000 Oh, maximum they can give you 3,000. per month. In a 1 month, month, okay. 3,000. Yeah. And if you have 10 accounts of Legends, 30,000. So that's one company. So do people usually get like 10 of the 25,000 or they get The 100,000? bigger the challenge, the more the time it will take you to do it. It's not that easy. Best is 25 or 50. That's good enough because the more you go higher, then you got to play a bit aggressive. Because look at the 9,000. You got to make 9,000 to do it. Gotta make 9,000. So some guys go. Best is 25 or 50? or 50, right? All right, it's coming down from where? 60 to 75. And once you pass, there's no monthly payments, right? You got to pay the first time 150. That's it. That's a one time. There's no monthly. That's 50 a month. The moment you pass your exam, Oh, got it. no more is there. Right. Sounds good.
This is the best. So get like 10 of these. Two. Yeah, like over time, yeah. The goal is to get 10 of these quickly. These are no point, yeah. If you make 6,000 or 9,000. This is easy to do. At least you can do this, yeah. Yeah, you got to make 9,000 5 days. That's for export when you're export. The bigger accounts, generally people split them in 2 months. So they will like Apex has a biggest account challenge, 20,000 you have to make. In 2 months, right? You can do it in 90 minutes. We had a guy came, sat down, finished in 90 minutes too, right? So with like 10 lots, 20 lots. So But all you have to maximum is 2 months. no, there's no maximum. Each month they will charge you, right? Oh, okay. So if this test you buy it for 50, but you take 10 months to complete, you will pay $500. So we ask everybody take the 50,000 challenge and the 25,000, which is you have to make 1,500 or 3,000. Yes. Yeah. It's possible in a month. Like if $100 a month, 150 a month, you can go through every a day. Yeah. So So this is easy to basically achieve, right? Yeah. it's practical, meaning it is possible for you to trade $100 to $150 a day and pass these tests, right? So And if 100 and 150 is consistent, yes, so try to increase, like make 5 accounts so that exactly. get So it stick to popular. 150 to 200 maximum, but take more accounts. All right, back again. There's no. So let's see. It didn't touch the It did mid-band. already, yeah, decrease the mid-band. Yeah. Much farther. And the max 4 contracts means per trade, you can put Per trade, 4 lots. 4 lots. Yeah. So one lot would mean $50. Second lot would mean $100 per point. 3 So lots, maximum you can take 4 lots. 4 basically. lots. So if you took 4 lots and 1 point, that's $200, Yes. right? So they don't allow you like 10 lots. They said just. But remember, 10. That's the same profit, same loss. It's not the. So lot sizes are quite 200 good. is profit, 200 loss can also happen. Yeah. Yes. Maximum you can go up to Four 4 contracts. contracts, not more. Like Apex is cheaper, and you can do 1-day pass. Legends is 5-day pass. If it's been 1 day, 1 day you can do. Some users buy at 5:45 and finish it at 6 o'clock, and they pass and they get a payout. I mean, they go. No, Legends is 1-day pass. Bullnox is 1-day pass. So these companies allow you to pass in a day. or legend is 1 day. Sorry, Legend is 5. Bullnox and Apex is 5-day pass. I keep confusing. Too many companies. Sorry. Take profit. I will put you guys as legends. Legends and take profit is 5 days. Apex and Bullnox is 1 day. Yeah. These are the two. because for our it's legends. You and start with legends, and then go to take profit. take profit eventually. And then, Then Perdia Capital, then your own money. so Podia Capital is like, $750 to buy an account. and what's the They give you $3,000. oh, That's a real account. You don't have a qualification. You go in from day one making your own money. and you can have the payout at the same day, right? After 10 days. After 10 days, Yes. $3,000 for $750. Yes. So you put in 750, they'll put in the remaining. So, but they only allow you one account. Right. So lots of companies. Is it harder to pass the Apex challenges? No, than no. legends? There, if you are consistent for $100 and $150 a day, you can pass any challenge. Yeah, take profit is also 5 days. 5 days, right? Take profit is 5 days. 5 right? days. Oh, yeah. So start off with legends and Yeah, I closed it, right? Because we missed the mid band, right? That is, they have really good rules in terms of stage 2. Stage 1, let's say you buy the stage 1 for $110. That's the price. You have to make $1,500 in a month. Okay, you pass it.
So the and 25,000. 25,000 account, 1,500 you have to make, and they give you 1,500. Great. You go into round two, you can pass it in one day. Round two. You have to do it again. Of course, every is round, like every take profit, bull longs, apex, legends is all two rounds. Round one and round two. Stage one, stage two. Because round one is $50. You paid $30 or whatever. These are round one. They're just testing you. Can this person trade? Then you go into round two. Round two, most costs are 150, 170, something like that, right? Because now round two is real money that they're going to pay you. Yeah. So they want some risk from you, right? They don't want to give you 100%. So In round two in Legends, there is no restriction like 5 days of there is. Apex has restriction 10 days. Legends has 10 days. Bulldogs has 10 days. Take profit has 1 day. So that's why stage two. So, stage two. so Legends has 10 days. Yes, you have to. 1,500. Correct. And maximum 450, you cannot go beyond Correct. that. Correct. It changes slightly. It's not 450, goes to 600. You can make 600. Okay. But the why I like take profit is you can go into a PA the moment after 5 days, and you can complete in 1 day your round two. Okay. And then third day you can get your payout. So that's what they That's the like. faster basis. That's the fastest way to get money out of a prop firm is 6 days. You cannot beat 6 days. Because we always look as I'm trading. Apex, the fastest is 11 days, 9 days, 8 days of round two, 1 day of round one. That's 9 days. So So why don't you recommend going for take profit instead of Legends as your first one? beginners don't want to risk $100. I say learn first. Okay. Otherwise, if I put you 100, you start blowing $100 account. It adds up. You blow 10 account. It's $100 account, right? Yes, it's 110. With coupon, it goes down. Oh no, normal is 190. It's with With coupon coupon is is 100. Oh, okay, yeah. it gets very expensive. If you blow 10 and take profit, that's 1,000 gone. Here you blow like 4, 5, 10 apex, you're still within the learning stage, right? So take profit is if you get couple of payouts from apex or bullocks or then you are in the stage of experimenting. Right, right. And then you get a few payouts from take profit and put it into Perdia. Take profit, yeah. Like take profit from Legends, put it into Yes, exactly. profit, and take profit you put it into Get Perdia. one account going, so it'll tell you your own. You're basically assessing yourself. Am I able to go and trade with my money versus somebody else's money, right? So Are Apex good at paying payout? 100, the biggest company, $500 million they paid out. Big money they pay out. But most difficult test. They have a very strict rule. Let's say you're in a trade and no other company has this rule. You have a $1,500 account balance, your threshold, and you go negative 450, they won't pay you. So they say, don't take an unlimited loss. Don't let the account go to minus 150, 130, 180, 200. Maximum, they say, you don't let the account crash. Some people, they are watching their account. 1,500 is the account. So it starts at minus 100, minus 200, When minus there's the 3. trade, right? In a trade. Yeah. So like Legends, you can bring it down to minus 1,400. And if you're lucky, it bounces back up. They don't mind. They say this person maybe knows what they're doing. Or Apex says no. If you start falling and you fall below 30%, they will not pay you payout. Meaning this person is gambling. This guy, they don't have a sense of stop loss. This is even with the Real account, yes. Stage one, there's no rule. Stage one, you can go up and down. Stage two is you have very, very strict. Do you lose the account if you do that? Yeah, you lose your account. No, you don't lose your account. They just don't pay you. They say, all right, this guy is just doing, I don't know what they're. And then what happens? Do the reset and then you have to try again? They give you another 10 days to try. So if in the first, they don't close your account. Let's say you were in a trade and it fell down minus 800. Yeah. And it went back up and you closed it in positive. Great. Yeah. Okay. Your account is, when you're about to request a payout, they're going to send you a line. Hey, you didn't manage this condition properly. Trade for another 8 days. We want to make sure that round 2, 3, 4, so they want to make you a better trader over time, right? So
They're not penalizing. They're not going to kill your account. They're just saying we're not going to pay you. You are not managing your risk properly. That's the word. Maximum is 30%. Amount stays there. Amount stays there. Correct. Amount. Correct. Because I used to, a lot of guys, Apex came, man, a cheat trick thing. The trick was you open up a trade in the morning, right? Like early, the moment 6 p.m. hits and you go short or long, it would run around whole market at the end of the day. It will go down to minus $400, $500, $600 Nasdaq, and you're back up, and you will close your trade in profit, right? They said everybody, you're just abusing the system. So we were in a trade for 6 hours, 8 hours. You can take 2 micros and let it run. Like so right now, if I sold a micro here, let's say 2 micros at 60, and if it goes to 92, for example, so 92 minus 60 is 32 points against me. 2 micros is $10. So it will go show me 32, but maybe by 5 o'clock, it is at 34, right? So you are sitting in a trade for long period, and they stopped it because most people were just sitting in a trade and just, okay, we'll see how it goes type of a deal, right? So they said, no, now they will let you sit inside a trade until negative 30% of your account balance. So if you have a $50,000 account, they will let you sit in $25, $30, $600. So every account size, they let you sit slightly differently. Okay. So as you pick a company, my favorite right now is Bullnox because why? $15 for an account when it goes on sale. And the rules are relaxed too, right? Or take profit, right? And these companies change their rules. Like Legend was great until they introduced the crazy rule that we're not going to pay you if you haven't made 150 in a day, in those 10 days, right? So Legend has that rule. So it's not a one company is good for like, so Oh, so Legend has that. Legend has that rule. Every day you have to make 150. 150 in the stage 2. Otherwise, that day won't get counted. Yes, you made $50, it's okay, but that's not the 10-day rule. Perdia has that rule too. Even they charge $750. They want to see you $200 making before they pay you, right? So there is a max too. So every company, because they don't want to give you unlimited amount of money, right? To say a person can come in. So in those 10 days, per day you have to make 150 minimum. Yes, for Legends. Correct. So 150 US Canadian. सर हर चीज यूएस है, सब कुछ यूएस है, तो उसका कोई कनाडा से ताल्लुक ही नहीं. लोअर लिमिट लेजेंड की लोअर लिमिट 150, एपेक्स की है 50 For payout. For payout. 150. in PA. If you don't make 150 That day doesn't count. Your money counts. If you made $60, $80, it's okay. They will add your balance, but they're not gonna give you any money for. So What do they count as a day? 12 a.m. or 6 p.m. 6 p.m. to next 5 p.m. is one day. So now we are stuck here around R2. Let's see. Touch the mid band slightly. वो एक टिक से रह गया. I'm waiting for half an hour. Oh, some days you wait for a long time for. It's on waiting to right now. Yeah, it's okay. In the morning, if somebody took a trade, we are all waiting to price 100 left. It's 22,050 now. So we got 100 points left before. First, it needs to get 50 points to get to night session high for Nasdaq, and then another 50 points to get to expected high. So we sit and wait. Tesla is at 332, Broadcom 250, Amazon is down, Nvidia, Microsoft, Apple. If you want to set, sorry. Go ahead. If you want to set up the copy trade, do we get help from the online chat box? Yeah. If you want to, for example, if you are ready that you know how I will be able to copy trades. So you take one account of Apex or another account. So you have, let's say you have 3 accounts. Apex 1, Apex 2, Apex 3, and he's got Legend 1, Legend 2, Legend 3.
Now, in a single day, you're getting area or mid-band or low of the bar one time inside a trade. You can't do either. You have to split your trades. I will trade this area, this account. Some users will link them all together as a batch, and whatever the leader is doing, follower will do the same thing. So if the leader, you pick something, account number one, you say it's a leader, and you put a trade at 74, and price goes down, the other two do nothing except copy that. You don't have to individually pick it and say, I want to sell here, sell on this. You can, but it's much easier to pass all five or fail all five, right? So the other four are just they don't care you're taking a good trade or bad trade. They're just following the Can system. you Right? set specific parameters for each account? So let's say I'm trading one contract here. Yes. Can you see two contracts here or? Yes, you can set it up that, okay, I'm doing micro here with 2 lots. This one can do micro 4 lots. This one can do a mini. This copier function has a lot of options. Copy, is it like a separate? It's a separate software you have to buy from Ninja, our website. It's a third party that sells it, so it's around $129 one time. Yeah. So that's just a software that lets you copy trades. When I was looking at Apex, they seem to have their own. Everybody has their own. I don't like it. I have both Flowbot and Copier. Both are similar prices. I like the Flowbot. The Ninja one, right? It's not. Both work for Ninja. Not made by Ninja. One is made by Apex. One is made by Flowbot. I like the Flowbot better. Does it work with TradingView? No. TradingView has our software does. No, sorry. Your account will. Apex works with TradingView. Correct. Yes, it does. So if I made the leading account, if I did it on TradingView. No. It has to do it on. Yes. All right, made a bit of a divergence. Let's see. 64 was the high. Let's see what will we get now. Come on down. Uncle, for the Legends payout cycles, what if you have like a couple of losing days between those It's 10 days? okay. Then your payout just keeps getting delayed until you fulfill the. You fulfill the 10 days. Okay. Now, that 10 days can happen in 10 or 11 or 12 or 13, minimum 10. As long as once you complete the 1500, then they give you the pay. Round 2 goes to 2,000. Oh, So you have to make 2,000 before they give you 1,500. So the fastest somebody can get a payout from Legends is 15 days. You complete your 1,500 in 5 days, and then for 10 days, you complete your 2,000. So for Legends, fastest is 15. And for Legends, you have to make 1,500 plus 2,000 in order to, so you need to make 3,500 in order to get 1,500. That's really the end goal. Bulldogs, their accounts are different. Take profit, round 1, you have to make 1,500. Round 2, you have to make 1,500. So that's, but anything above 15 round 2 is yours. You make 10,000, it's yours. They don't ask you. Profit. Intake profit. So I have users who day 1, personally, I have I bought the account for $110. I completed it 8, 9, 10 days, and then I went into round 2. There's no fee for round 2 intake profit. They have a promotion. Pay us 110, don't pay us for round 2. Okay, great. So all I cared about is I wanted to recover my $110 that I paid them, right? So I got to 1,500, then I made $200, and then I withdrew the same night. I still have my account, still has 1,500 on it. So I got it to like $283. I took that out, no problem. Now I'm in surplus. Second day, I took out another $300. That's now I'm up to Take payout every day. Yesterday, I took a payout of $741 because I was playing aggressively with full mini, right? A couple of lots because I have recovered 4 times my investment from them, right? Right. So today I have already made $351 on that account.
So now it's like a $100 account has given me $1,200, right? So and now I'm playing aggressively, right? So, yes, yes. $110 का अकाउंट है, अगर 30 दिन में पास कर लिया तो पीए की फीस नहीं है, लेकिन अगर नहीं पास किया तो फिर आपको एक और 110 देने पड़ेंगे ना राउंड 2 के. So every company we test first before we pass it on to you. They're all within the range for anywhere from $50 to $100. That's the upper limit. And you said in take profit for the second level, you have to make them 1,500. 1,500. And the rest of the money is yours. Yes. So they don't keep anything, right? No, and they split 80-20. So their split is higher. So if it's more than 1,500, they'll pay us 80 and keep 20. Correct. So what you do is, let's assume you're in stage 2. You have completed your stage 1, and so take profit comes, says, all right, here's $1,500. We give you, loan you, make that first. So now you have made $1,500. That becomes your base. Yeah. You cannot touch that money. Yeah. Anything above you make, you can withdraw daily. You make $500 in the evening, take it out. But they don't let you take anything, everything above 1,500. So it's not like you made 500, you can take 2,000. No, the original $1,500 stays. So all funded companies will loan you money at the beginning, so in stage 2. So how much money? Let's say even Legends says you gave us $150, we're giving you $1,500. Great. You build up the money, and then you cover it with your own profit, right? And then they're out. So now you're working with your own money to make it. Okay, So goal is to do Legend first and get used to this 5 days of consistent trading. Because passing either Apex or Legends or take profit or Perdia will tell you, are you able to trade? So that's the 5 days of consistent trading. $400. Yes, yes. Then you are okay. Then you are, if you get really 15 days will truly wash you out. क्योंकि आप न्यूज़ देख लेंगे, ट्रम्प देख लेंगे, 15 दिनों में बड़ी चीजें हो जाती हैं, right? So every day. Yeah, makes sense. देखिए आज आई सीपीआई वो शूट कर गई जी ऊपर 8-3 के ऊपर, तो देखें ये न्यूज़ आपको 4 दिन पहले तो नहीं पता था कि ये भी हो सकता है, right? So now I'm waiting for a number 22,150. वहां जाके अगर वहां से रिवर्सल ना हुआ तो वहां लॉस लेना पड़ेगा, right? So this is see right now for an hour it's stuck at this. Let's see 11 o'clock candle. What will it do? Getting it stuck at like 6061, 63 like this. Okay, let's do any desk right now. I think it's way worth just See, that's a news one. 830. Like 60. Expected higher, then they could just kept selling. लेकिन you didn't know ना कि ये नीचे जाएगी, right? So it's an upper range of R2 for Nasdaq right now. Yeah, it has to go down. Short and expect higher, then we could sold. Yeah, non-stop selling, open trading. Like that happened at 8:45. कब आया था? 820 आया था? Yes, Park. In 30 years, शुरू हुआ फिर 8:45 के बाद came back. कर दिया होता तो probably we would have made that. इतना नीचे गया, यहाँ तक गया. I don't normally take it, so that's why I'm waiting for 78. Yeah, exactly. So, but one area, one time done, we call it done. Yeah. There you go. Here. हाँ जी. मुझे any dust thing? See that yellow money. Control center में. मतलब वही क्या? अच्छा ये आया है ना $140. ये आज का है. ये लॉस हुआ है ना? हाँ.
Which one is loss? This or this? ये तो हाँ base loss है, but actual loss is 154 with the commission and everything. नहीं, R3 का वेट करें जी, 150 का और 78 का जी। हाँ जी, डेली जो आप प्रॉफिट लेते हैं, लॉस लेते हैं, हाँ जी। कहाँ निंजा में कहाँ जाके देख सकते हैं? Where we can go and see that? You can go Ninja. These demo accounts really don't have so much. इसमें कंट्रोल सेंटर में देख सकते हैं। These are नीचे एग्जीक्यूशंस में, या ये जो रियलाइज्ड है ये आपका है, ये realize है कि जो ये फाइनल लेजर है। नंबर देंगे 100 एक्सेप्ट करें। R3 का वेट करना है। Waiting for R3 now, huh? Limit से करके चल जाओ। Set your limit and leave. Oh, sorry, I got our login. एक दफा फिर एक्सेप्ट कीजिएगा। Okay, thank you, uncle. Take care. Okay, bye. Take care. क्या हाल चाल? नहीं मैं तो नहीं कर सकता। अपना पासपोर्ट पासपोर्ट सेट करें। आपका है कर दिया। अब मास्टर आ गया। हाँ, उसमें 4100 बनाए। हाँ, ताकि आपको 1500 मिल जाए। यहाँ पहुँचना है 4100 और 100 से कम वाला देना रखिएगा। 100 तो एटलीस्ट भरे ना। हाँ, एटलीस्ट बस दैट्स इट। आईडी मांग वो बाद में मांगेंगे, वो जब पे आउट की बात आएगी। नहीं, उसकी वेबसाइट पे लिखा भी करवा देता हूँ। लॉग इन करें। अच्छा सर, मेरे को ना एक चीज और पूछनी थी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे मुझे ना बुलनॉक्स का सिस्टम सही लगा। ठीक है।
सारी फंडेड कंपनियों का सिस्टम स्लाइटली डिफरेंट है। सिस्टम की भाई आप एक तो पैसे भी कम है अकाउंट के पैसे कम है। दूसरी बात है 90-10 की रेशियो दे रहे हैं मेरे। हाँ हाँ यस। में भी सोचें तो दैट इज आल्सो ये भी काटेंगे, अभी नहीं, पहले कुछ पे आउट्स में नहीं काटते। वेबसाइट पे पढ़ा है हाँ, 10,000 पहले 10,000 में नहीं काटते। उसके बाद 10% काट। यस यस आप सजेस्ट कीजिए कि ये कंपनी बढ़िया सर, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास सारी हैं, वो डिफरेंट है। लाइक ईमेल में लॉगिन कीजिएगा सर, ईमेल। बुलनॉक्स भी है बिगिनर्स के लिए, लेजेंड भी ठीक है, बुलनॉक्स भी ठीक है, सारों में रूल्स गिव और टेक सेम ही है। इसमें आपने बनाने ज़्यादा है। 4100 पे जाके 1500 मिलेगा, लेजेंड में आपको 2000 पे 1500 मिल जाता है। ये फर्क है ना, डबल भी तो बनाना है। 50,000 का ये 2000 पे 1500 दे देंगे, वो 4100 पे कहेंगे 1500 लेना। तो जो सेकंड स्टेज है सेकंड स्टेज में थोड़ा सा है। और जो 2000 के बाद 1500 नहीं, 4100 बनाना है। लेजेंड में 2000 बनाए तो अगर लेजेंड वर्सेस टेक प्रॉफिट है, फिर टेक प्रॉफिट बेटर है, क्योंकि इनिशियल पे करें 110 और राउंड 2 की फीस नहीं है, और पहले 1500 बनाए, फिर 1500 बनाए, फिर आप डेली पे आउट्स ले लें। तो रियली यू हैव टू पिक एंड चूज के कॉस्ट क्या है। 1500 कितने दिन में, वही 5 दिन वाला सिस्टम टेक प्रॉफिट में 5 दिन में, जैसे लेजेंड में 5। जिस तरह लेजेंड में। हाँ जी, सॉरी, yeah, first round you can do in 1 day, correct. 8 days, 10 days है, 10 days. And the maximum is like you can make 6. नहीं 4100 बनता है ना टारगेट, तो उसमें मैक्सिमम 30% है, तो $1240 बना सकते हैं। 1 day, यस यस। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो फिर तो बोलना सर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, टेक प्रॉफिट है सबसे लॉन्ग टर्म। डेली पे आउट है ना, आपने एक अच्छा दिन बनाया, 300 बना लिए, शाम को पैसे ले लो ना, क्या 10 दिन इस स्टेज में रहना, कंसिस्टेंट स्टेज में, तो टेक प्रॉफिट कहता है ठीक है यार, आज आपने पैसे बना लिए, दिन अच्छा था, 1500 बन गए, ले लो शाम को। तो ये जो सेकंड स्टेज है हाँ, इसमें कितना, वो 1500 1500 के ऊपर जितने बना, पर उसका ये महंगा है ना। उसका ये 100 का है। देखें वो कंपनी उधर पकड़ $0 का, वो दे ही नहीं रहे, मीनिंग के उसकी कॉस्ट ही नहीं है। अच्छा, वो दोनों कॉस्ट उसी में ले रहे अब वो कहाँ से पकड़ते हैं आपको, हर चीज का कैच है ना। वो कह रहे हैं लोगों ने फेल तो करना ही है, भाई पीए वाला तो क्यों ना 100 ले लें। तो वो कहते हैं पीए में मिलता है ये 7 दिन या 5 दिन ट्रेड। एक दिन, उनकी कोई कंडीशन नहीं है। वो जब है ये में 5 दिन है, तो फास्टेस्ट कंपनी जो आपको पे आउट दे सकती है वो 6 दिन का है। 5 दिन ई में करें, 1 दिन करके क्लियर कर लें। So every company has their own rules to Apex 1 दिन में पास है, और सबसे मुश्किल कंपनी मेरे हिसाब से एपेक्स है, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन रहना है, ट्रेड के अंदर भी -450 नहीं जाना, वो एक और रूल उन्होंने डाला हुआ। सो पे ही नहीं करते आपको, अकाउंट नहीं ब्लॉक करते, पे ही नहीं करते। अब लेजेंड है $150 बनाना है, तो देखिए ये सारे फ्लेवर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कंपनी इजियर देन। हम आपको लेके चलते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कितना है आपका। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेजेंड से स्टार्ट करें। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेजेंड से करें। लेजेंड से चले, आप निकले एपेक्स या बुलनॉक सेम है, वहां से थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस सीधा हुआ तो आप टेक प्रॉफिट पे जाए। आप $100 का है ना, टेक प्रॉफिट से कुछ पैसे आ जाएं तो परडिया में चले जाए, क्योंकि सीधा मैं आपको परडिया में ले जाऊं, 750 का अकाउंट है, गए तो फिर आप हफ्ता ही यहाँ रहोगे। तो नहीं सर, आप लोगों की सलाह बहुत काम आती है। स्लो एंड स्टडी लेके जाना। डिस्कशन के लिए 1.5-2 घंटे ड्राइव करके आया हूं। नहीं। अभी तो आपने ये पे करना है ना, ये 148 कर दिया ना, अब आपका टारगेट है 4100। जब तक वहां 4100 नहीं लिखा था ना अकाउंट बैलेंस में, समझें कि आपको पे आउट नहीं मिलेगा। फिर 40, आई थिंक साइड बाय साइड अगर मैं टेक प्रॉफिट का भी एक अकाउंट निकाल लूं, हाँ, इट्स अप टू यू सर। नो,
सेल लगने दें और बुल नॉक्स ले लें, मेरे पास 11 हैं। अभी नहीं, अभी अभी वो लगी हुई है 29 की, $24 24 की है, तो लेकिन हमें वो अच्छी लगती है $15 वाली। $3,000 वाला 3,000 का देते हैं ना, पर वो लोग ये वाला नहीं। हाँ एग्जैक्ट। उसमें 3,000 बनाओ, इससे बेटर अपने 2 अकाउंट ना कर ले आदमी। लेकिन वो ज्यादा 1500 में भी आपने पहली दफा 1500 करना है और दूसरी दफा उसमें पे आउट कम है ना, $500 देते हैं। तो जो आइडियल बुल नॉक्स का अकाउंट है वो 50,000 वाला है। पहले राउंड में 3,000 बनाए, दूसरे राउंड में 4100 बनाए, तो अब आप 7100 बना लिए तो आपको 1500 मिल जाएंगे। इस आपके डिस्कशन से तो सबसे बेटर टेक प्रॉफिट ही लग रहा सर लेकिन महंगा है ना, मैं बिगिनर्स को नहीं देता, क्योंकि मुझे पैसे आपके हैं, लेकिन अगर गिर गए तो ये क्या हो गया जी एकदम। I'm in a trade right now. I'm in a trade. I am in a trade for short. Yes, yeah. I was short. I was short long time ago. I was short from all the way from 64. MES को मैं short में था, ये हुआ क्या एकदम। That's a good news. 55 पे आ गया जी। What happened? All of a sudden market just dumped. Oh, 11 o'clock maybe. सर ये KYC आपसे करते हैं तो आप अपना सिन डालें, एड्रेस डालें, फ़ोन डालें, सब कुछ करें तो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। जाने दें जी, अब जाए, ये भाग के जाए। मेरा बिल फेल हो गया सर माइनस। ग्रीन में कौन सा मिड, आई मीन प्रेशर डाउन हो तो वैसे ही मैं ग्रीन वाले छोड़ देता हूँ। हाई टू गो की स्ट्रेटजीज में ग्रीन वाले मैं कहता हूँ आई एम गोना स्टे इन शॉर्ट। गिर गए जी, बिल्कुल अपर नंबर लेके आई है जी, 22,060 वाला हमारा नंबर था और वहीं से आई है आपको गिरती हुई। आठ वो चीज जिससे बनी हुई है Nasdaq की है। एक दफा फिर उन्होंने लिक्विडेशन ली थोड़ी सी 55। मैं तो सर 78 पे इंतजार कर रहा हूँ वो। सर मैं भी आपके बड़ी स्पीड से नीचे आई है। This is not a news reaction, right? Sorry? This is not a. Yeah, this is just somebody came in with a lot of money and they said, all right, let's dump it. Right? So that's what our goal is. So last 18 years has been a steady growth. Last 2 years, our growth has been gone exponential. The number of subscribers. When we get to 100,000 subscribers worldwide, we are roughly around 12,000. Well, the benefit of this is when we all call out a number. All right, we will all short from 78. Everybody has a power. 12,000 users don't have power. Out of don't know how many trading crude oil, how many trading Nasdaq, how many trading gold. But if we push out an area, कि यार हमारी expectation ये है, computer and lots of people buy and sell at that number, then you have a big push, and then everybody makes money together. So that's eventually the goal. सर आपको मैं सेट करूंगा 50,000 वाला, ठीक है, वो स्लाइटली बेटर है इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड और 500 के फर्क से आपका आगे। लेट मी पुट इन द कोड सुपर एरियाज। Start up again.
3020 has a bit of SRES happening. So hey boss, how are you? When you do real money payout, do you give US dollar Account. So the best is Wise. Wise opens up a free account for you in less than 10 minutes. If you go on our website, click on the banner, you can do Wise account. So then the money management becomes easier. Once it lands into your Wise, you can keep it into US dollars or you can send it to your local bank. By e-transfer, you can take the cash out, you can spend it. So for example, they give you this app, Wise app, and they give you, this app as well. You can spend it, you can tap it. It's prepaid card. It's a US based. It's a US based company. So they have a good presence and good system for. तो अब हम सब आपके एग्रीमेंट साइन करेंगे और वो सारे ट्रेडो वेट के लेजेंड के स्टाइल से जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आई इसके अंदर ट्रेड कर लिया तो अगर आपने अब मैं इसके सारे क्योंकि आप ले रहे हैं तो सारे रूल्स लिख देता हूँ जो आपने फॉलो करने हैं कि रूल इतने मुश्किल नहीं है Too much fluctuation. Back to 58. सर उसी तरह लिखें जिस तरह स्पेस तो नहीं डली एक सेकंड मैं नहीं शुरू में पहला नाम एक oh. तो ये 50,000 और आपके पास 2,000 का बैलेंस है तो ये शो कर रहा है डिस्टेंस टू ड्रॉ डाउन दैट्स हाउ मच मनी यू हैव एंड दिस नंबर नीड्स टू गो टू 53,000 3,000 बनाना है और 2,000 का आपके पास गैप है नो दे डोंट हैव एनी उसमें है डेली लॉस मैंने वो क्या अकाउंट खुद
डेली मैक्सिमम इतना ही बना सकते नहीं वो 30% है। तो लेट्स से अपर का टारगेट खुद सेट करें 4100, तो उसका 30% है 1240। तो इतना का आप सेट कर लेना। नहीं, जो एंड टारगेट जो सेट करते हैं ना कि ये इस अमाउंट पे जाके मैं विड्रॉल लूंगा, तो मैंने 41 सेट किया है, तो उसका 30% बनता है 1240। तो मैं एक दिन में 1240 से ज़्यादा नहीं कमा सकता। क्या उसके बाद अकाउंट बंद करेंगे, क्या करेंगे? सॉफ्ट लिमिट है या हार्ड, ये देखना है बस, क्योंकि कुछ कंपनियां देती हैं सॉफ्ट लिमिट, कुछ हार्ड। सॉफ्ट होता है कि आपका अकाउंट नो लॉन्गर ट्रेडेबल होगा लेकिन अगले दिन आ जाए। हार्ड ब्रीच होता है कि नहीं, आपका पीए ही जा रहा है। ये सिर्फ देखना होता है। ओके जी, ये आपका यूजर नेम आ गया। लेट्स सी, माय निंजा ट्रेडर। Hi, sir. So, Just want to say जी, hi to you. oh, welcome back जी। Thank you. Good to see you again। Same here. कैसा रहा जी ट्रिप आपका? ठीक। और इंटरनेट नहीं था। Okay, that's normal। और बिजली भी नहीं थी, बट चलो शुक्र अल्लाह फिर भी। विजिट में आई हैं, वापस ही आ गए? लोग कहते बड़ी डीठ हो तुम, वो लोग कहते हैं इधर होकर आते हुए जाते उस तोबा, हम नहीं जाते वापस। ये आपका टेक प्रॉफिट का अकाउंट ऑल सर, सो इट्स ऑल गुड। लेट मी जस्ट, वो सॉफ्ट कर देता वो सॉफ्ट लिमिट है ना? हाँ, या ताकि एग्जैक्टली बिकॉज अदरवाइज हार्ड लिमिट्स नोबडी वुड लाइक। हार्ड लिमिट है 25। यस, वो तो आपका So when you have a second, I have a question. नो प्रॉब्लम। Internet. So कहते हैं 20 is enough in Pakistan? सॉरी, 20 is enough. 20 मीनिंग? Internet. ओ या प्रॉब्लम इंटरनेट का नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। वहां से हॉप्स 20 पड़ जाते हैं, क्योंकि उसने इंटरनेट शिकागो मर्केंटाइल यहाँ से 8 हॉप पड़ जाते हैं। तो कई दफ़ा हमें प्राइस सही नहीं जा रही है। अब आपके चार्ट्स लोड होने हैं, लाइक यू नो स्पीड तो लोकल है ना, आप क्योंकि यूट्यूब वालों ने अपना सर्वर पाकिस्तान में रखा हुआ है, फेसबुक ने सब कुछ। लेकिन जब आपने शिकागो मर्केंटाइल कनेक्ट होना है तो मे बी यूरोप वुड बी द फास्टेस्ट। तो ये प्रॉब्लम है कि आपको, इनके पास सर्वर सारे अमेरिका में है, तो आपका जो कनेक्शन आता है लोकल स्पीड तो ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते डिले आ जाता है। उसका ये हल है कि यहाँ कोई कंप्यूटर सेट करें और उसके अंदर लॉगिन करें और ट्रेड यहाँ से डालें। यानी कि यहाँ अगर उसको हम वीपीएस कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं, तो वो सेट हो। यस, यूएस में वीपीएस सेट कर लें, तो अगर आप वहाँ से कनेक्ट कर रही हैं तो फ़ोन से भी हो जाएगा, लैपटॉप से भी हो जाएगा। तो आपका ट्रेड लोकल है, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ वीपीएस तक हो। क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ ट्रैवल यूएई में जाता हूँ, मैं अपना वीपीएस के अंदर सेट होता है सारा। तो
charges for that? I think a good VPS is about $100 a month. I think it's worth it because क्योंकि वहां पर होगा ये कि आपका कनेक्शन ड्रॉप हुआ तो ट्रेड भी ड्रॉप हो जाएगा तो sorry trade and accident lage. हाँ जी I lost money because of it. yes it can happen it can no problem. It's called VPS. VPS virtual private server. Is it different from VPN? VPN is different. VPN is just covering your IP to go somewhere else. VPS, that's virtual private network. You need a virtual private server. So if you are not trading from these zones, you need that. Especially जिस तरह पाकिस्तान से कर रही हैं मुश्किल है जी ना बिजली आती है ना इंटरनेट ना निंजा के चार्ट्स लोड होते हैं कुछ भी नहीं चलता तो और वहाँ आप R2 पे बैठी हैं प्राइस R3 से भी निकल गई है तो it is डिले बहुत है वो देखें वो तो नॉर्दर्न एरिया से हैं वहाँ तो बिजली आ जाए बड़ी बात है so, Do we set up the VPS here? yeah you do it locally here and then when you're traveling if you're not traveling that far or for 5-10 days you don't need it because They're saying that Starlink तो सैटेलाइट इंटरनेट है ना वो ठीक है अगेन इशू डेस्टिनेशन दूर है आपके so VPS virtual private server मुझे डैनी डेस्क के लिए हमारी टीम सेटअप कर देगी कार्ड आपका ही जाएगा हमारे से थ्रू कुछ नहीं होता लेकिन दे कैन सेट इट ऑल अप डायरेक्टली शिकागो में शेष मेरा VPS शिकागो में पड़ा है तो मैं शिकागो से ट्रेड करता हूँ से डायरेक्टली यस तो ये एक एडिशनल कॉस्ट हो जाती है वहां पर रहने की पर भाई इस बीच ऑफ माइंड तो आपकी मेहनत नहीं हाँ महीनों के आपके पैसे कम you can always move back to Canada that's another always an option my parents are very old. I know I'm just saying that सिर्फ आपका अल्टरनेटिव यही है आप जब दुबई वगैरह ट्रैवल करते हैं आप सीधा करते हैं हाँ हाँ देखें anywhere So did you say the dial has that system that we can purchase? no you can send any desk to our number and then they can log in and they can set it all up for you no problem team is trained to set up VPS it's not recommended because if you not traveling that's an additional $100 a month for no reason Yeah, I'm traveling next month. yeah but I have to say 2 different destinations you go India yes India is better than Pakistan 10 times better yes it's a huge like यहाँ तो हमारे बिजली नहीं आ रही पानी नहीं आ रहा I'm not going to India though. It's okay, still better. Just test it. Just see how your trade is happening. We know constantly we have a problem, right? I haven't heard Indian students having problem. Huh? voltage भी कम Voltage भी, yes. strength There you go. एक और दफा जी मार्केट गिर रही है. It's falling. इंडिया का तो रूरल एरिया में इतनी अच्छा इंटरनेट है I'm not from India though. you're from India I know Even Sri Lanka is fine. Sri Lanka is better even Sri Lanka is better Even UAE is good because they have good infrastructure to put it in place to make sure that I have a lot of students in UAE. Australia I had problems though because their internet is far too. So even though it's a first world country, it's just the whole idea of so go when you are traveling. Let's say if you struggle with the trading and your orders are, then you send a WhatsApp. We can open it up, but I don't want you to subscribe. And it's only you can subscribe and not need it, right? So So the group WhatsApp. yeah, exactly. That's 647. They can help you. yeah Website, right? yeah they're pretty good they're fast Yes. they all will help yeah just with me they cannot help me with the charts because I'm through Delhi sometimes so they won't help me with that other than that anything they help सर इस सर्विस के लिए आपको लोकल इंटरनेट चाहिए ना इंटरनेट तो चाहिए ना I think we should raise the debt ceiling. फिर अब ये उल्टा काम शुरू हो गया Then what?
ओके जी, मैं अब आपको क्विकली एक्सप्लेन कर दूं आपके रूल्स क्या हैं. I prefer not to look at the dollar. The number. अब अगला मसला डेट सीलिंग का शुरू हो गया जी. एक मसले से निकलो अगला. यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन रेडी होती है. पर अभी तक हमने वेकेशन ही नहीं. मैं क़यामत तक इधर ही हूँ. जजमेंट डे पे ना आखिरी बंदा होऊंगा, अर्थ से जा रहा हूँ. वो कहेंगे ट्रेड तो नहीं लगा हुआ किसी का भाई, तो देख कोई नैस्डैक में तो नहीं फंसा हुआ. ये जिंदगी है मेरी. कह रहे हैं यार चढ़ो चढ़ो, जाना है ऊपर, जाना है. करो वेट करो, देख ले सारी मशीन आपके पोजीशंस क्लोज हो गई हैं. No, I'm replicating like candle to candle. I took me 2 years to trade one guy, 3 years. Now he's traveling to Vancouver. Happy. Like, I mean, I have to transform everything I know to somebody new, right? Takes 2 years. It took Daniel 2.5 years to transfer to me. It's like, upload, download. So now the new guy, Murtaz, took him 2 years. So if somebody shadows me 2 years, they can run the floor. That's it. 2 full years, 9 a.m. to 5 p.m. They can see. ये 2 साल में तकरीबन सब पता लगा. आधी प्रेसिडेंसी यूएस की निकल जाती है. So good enough to figure out what's going on. ऑटो वाले इतने खास नहीं. ब्लैक कैंडल भी चलती है, लेकिन वो कभी एक पैक स्कीम में आ जाती है, कभी टेक प्रॉफिट कहते हैं कि ऑटोमेशन नहीं कर सकते. सिर्फ इवन फंड अपने ओरिजिनल वाले भी आपका वो स्लिपेज डालना शुरू कर देते हैं. तो अब इतना ऑटो कर दिया कि आपके अलर्ट्स आ रहे हैं कि आपको थोड़ा पहले पता लग जाता है कि ये एरियाज हैं. ऑटो वहाँ पे सूट किया था. नहीं वो ठीक है, लेकिन ऑटो भी किसी नकल के लिए अकल चाहिए ना. उसको ये नहीं कि खुला ही छोड़ देना. ऐसा ही है. मैं यही कह रहा था कि उसको when the order comes, you notice it. Exactly. By the time I calculated, मेरा ऑर्डर पीछे लग जाता है. तो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है इवन बेटर. अच्छा ये अलाउ नहीं कर रहे. most people did this. So ये भी तो हो सकता है ना, ऑर्डर हमको उसको लगाने दे, क्लोज हम खुद कर लें. Yeah, that's fine. That's can be like not. आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए उसको यूज करने का भी ना. मैं इसको ट्राई किया हुआ काफी टाइम से. ठीक. I like it. It's good. ब्लैक कैंडल वाला नहीं. Yeah. मिड बैंड मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि वो मल्टी पोजीशंस ओपन कर देता था. I don't like it. It flips on you when it's very rush. Yes. तो आजकल ट्रम्प की वजह से तो एवरी डे समझ नहीं आती कि सुबह उसने क्या कहना है, शाम को क्या कहना है, दोपहर को. यूरोपियन मार्केट में बैठती हूँ. वो स्लो. सुबह 3 बजे वाली ठीक है. वो इस वक्त ट्रम्प भी सोया होता है ना. इसकी जोड़ी से सुबह. हाँ वो स्मूथ मार्केट है, वो कोई इतना पागलों का काम नहीं. उसमें ब्लैक कैंडल ना बहुत अच्छी चलती है 30-20 पे. But you gotta watch your things. आप ये नहीं छोड़ सकते बिल्कुल खुला उस पे. मैं तो हैरान था आप ट्रेड कर पा रही हैं पाकिस्तान से. इट्स अ डिजास्टर Figure out कि why I keep losing money. Then I figure, oh my God. क्योंकि आपका ऑर्डर लगता है और 20 हॉप्स के बाद दूसरा ऑर्डर लगता है. They will give me money, then they will take it away. क्योंकि उस दौरान और Nasdaq. Yes. Okay. So to explain take profit in detail, if they want to learn it, listen, let me double check. Good. सारी 30-10 में जो है सारी बाबा अभी हाई लो आ गया. हाँ ये भी बन रहा है. तो ब्लैक कैंडल पूरी फॉर्म होगी तो फिर इसको नीचे जाना चाहिए. तो पहले 15-10 में देखते हैं. देखिए ये डेट सीलिंग की बात शुरू हो गई यहाँ पर. ब्रेकिंग न्यूज, प्राइसेस गो अप
due to tariffs, it will be on one time. So anyway, these guys will fight. It's all manipulated. Topi drama chal raha hai. Retail investor ko बेवकूफ bana rahe. We just need to know where the levels are. That's where how we trade. So take profit. Yes. Take profit. एक अगर आपको लाइट को थोड़ा सा July 10th आपकी डेडलाइन sorry I will have to start coming this way क्योंकि प्रोजेक्टर दरम्यान या एक स्टेप उधर हो जाए I gotta hang it from the side. आपके पास ये दिन है आज आपने पे किया $119 US. So if you complete this target in 30 days, you don't have to pay round 2 fees. Okay, so today you are on stage number 1 and आपका account मैंने आपको show इस तरह किया था. You have $50,000 account and a $2,000 of buffer. You cannot go to zero. If it goes to zero, your account is blown. This number has to end with 53,000. Can add more, but at the moment you cross this line, you have passed your exam. So let's look at profit. You take profit 50K. नहीं इन्होंने लिया पर जिसमें थोड़ा सा थ्रेशोल्ड ज्यादा है क्योंकि और ये doable है within 30 days, right? So rule number 1, make 3,000. Rule number 2 is max loss is 2,000. So that's it. 2 rules. Number 3, you cannot make more than max profit in a day is 1,500. So if you were to trade aggressively, the maximum profit you can make is 1,500. 50%, right? So that's the third rule. 200 बनाए 300 बनाए. The fastest you can do this 1500 एक दिन बनाया 1500 एक दिन बनाया अब तीसरे दिन $1 का ट्रेड किया चौथे दिन 1 का ट्रेड किया. It doesn't matter up or down. Number 4, यार ये रूल 459 में नहीं लिखा मैं 430 लिखा. मेक श्योर करें ट्रेडो वेट पे जाके कोई पोजीशन ना ओपन हो कुछ लेजेंड की तरह ताकि आपका अकाउंट ना क्लोज करे. Really these are the rules. So complete it and you 5 days. 5 days plus. No less than 5 days. No less than 5 days. So really you cannot pass this in 2 days. You cannot do it in 3. But yes, you can pass from 5 to 500. But if you went into round number 2 in a month, there's no fees to go to round 2. So you just paid 119. That's all. So it becomes cheaper when you're able to achieve the target. In your case, you did bull long for $16 and you paid almost, let's say, $170 की आपको cost है. जो ट्रेडर बन जाता है उसको फिर भी $50 यहाँ से फायदा हो रहा है ना. आपने पे किया 170, $20 उधर 150 उधर, चलो 160 पे किया. इन्होंने 119 पे किया. सेम है ना 50,000 वाला अकाउंट. I'm sorry, but if you lose this, you're losing 16. He's losing 119. You see how the shifts of power changes. If you are not an experienced trader, stick to that. As you gain experience, this is the most expensive account there is after per dia. Per dia से ज़रा महंगा. So let's put in some numbers. Okay, same idea. Today you made $150. They don't give you any more money because you already have a maximum $2,000. So yes, tomorrow, day number 2, you come in and you lost $300. Of course, you lost 300 from your threshold. So whatever you lose, you gotta make it back up. So this number is only for finding out what your available, what your target is, and this number. When you open, please, I keep repeating it. If you're doing Apex, if you're doing anything except the rhythmic ones, keep trade open first.
Some people have trader weight on Legends, Apex, and Take Profit or Perdia. I have 4 tabs open. One Take Legend, trader weight. So you know if there's a trade running. Because sometimes Ninja has crashed. So make a habit of opening your trader weight first, logins, and then you trade your accounts differently. So once you get to 53,000, you are passed. Congratulations. You move it up, and everything is as good as it's supposed to be. So make 3,000. Do not take a maximum loss. Yes, I've taken losses too. Yeah, कोई trade miss हुआ, area miss हुआ. आप decide कर लो यार दिन का कितना loss लेना. 300 के बाद मैं छोड़ रहा हूँ, 200 के बाद मैं छोड़ रहा हूँ, 100 के बाद छोड़ रहा हूँ, 500 के बाद छोड़ रहा हूँ. लेकिन आपके पास है 2000. अब आपने अगले दिन आए फिर 500 बना लिए तो वो आपको वापस दे देंगे 300 क्योंकि आपके पास जितना थ्रेशोल्ड कम है वो वापस टैंक फुल हो जाता है. इवन आप प्लस में जा रहे हैं मगर आपको जो अलाउ था वो नेगेटिव ही देगा. इसको रिपीट Like, करें. you know how, for example, you made 500. ठीक है, आपके पास पहले दिन आपने 150 बनाए. ठीक है, ये 3 दिनों का लिखा. आपके पास 2000 थे, उन्होंने उससे ज्यादा देना ही नहीं. आपका अकाउंट मैक्सिमम हुआ ना 2000 ही है. अब दूसरे दिन आई आपसे ट्रेड गलत लगा या लॉस हो गया, 300 माइनस हो गया. अब आपके पास कितने पैसे हैं? 1700. तीसरे दिन आई आपने 500 बना लिया. So they give you back the threshold? हाँ वो आपको दे दिया ना उन्होंने. तो वो आपको दोबारा टॉप अप कर 2000 वापस आ गया. अब आप कहते हैं अच्छा इसका पूरा होना जरूरी नहीं है एंड पे फिनिश गोल. कई दफा 1000 भी रह जाता है आपने, लेकिन आपका टारगेट पूरा हो गया तो साथ साथ आप लेते आएंगे. तो डे 1 में आपको ये रेशो शुरू हो रही है 3000 to 2000. ये आपकी रेशो डे 1 की है 1.5 to 1, राइट. सो ये आपका सर टारगेट है. इसमें आपने 11 जून से आज शुरू किया, आपने ट्रेड डाला 10 जुलाई से पहले, क्योंकि 10 की रात को क्या होगा $119 फिर चार्ज हो जाए. अब ये महंगा हो गया काम उस बाकियों से. तो कोशिश करके अगर आपसे नहीं हुआ, आपके पास $100 रह गए और मीनिंग कि आपका थ्रेशोल्ड खराब हो गया, तो अकाउंट किल कर दे. उसमें फायदा नहीं है क्योंकि वरना 119 में आप नया ले लो यार, आपका रोल ओवर हो गया था ना. तो अब अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो 3 ऑप्शंस हैं आपको मिलेंगे 10 जुलाई को. एक ऑप्शन तो आप है उससे पहले आप पास कर गए, ठीक है, आप ट्रांसफर हो जाते हो राउंड 2 में. एक आपका ऑप्शन है आप फेल करके. फेल क्या करके यार आपसे 2000 का नुकसान हो गया. आपके कितने पैसे गए? 119. आपका 2000 का नुकसान हो गया. ठीक है जी, हो जाता है. ट्रेड गलत लग गया, एक दिन 500 का नुकसान हो गया, एक दिन 700 का, एक दिन 8, पूरा अकाउंट चला गया. उसको कैंसिल करें, उस अकाउंट को एक नया खरीद लें. ठीक है, अगर आपने टेक प्रॉफिट ही करना. थर्ड ऑप्शन इज व्हिच ही डिड, he got very close. Let's say he was $1,300 बन लिए थे, 3000 बनाने थे, तो आप $119 फिर पे होंगे और आप वहीं से कंटिन्यू करते जाओगे. So if your account is in a healthy state that you think I can carry this over, you can carry over. But then it doesn't make a sense to make it in terms of कि यार अब आपकी कॉस्ट आ गई 120 और 120 240 का पड़ गया आपको एक अकाउंट. उसकी अगली फीस नहीं है, बाय द वे. We found that out because we have. Plus there's no activation fees? There's no activation fees. Oh. तो लेकिन आपको कोशिश ये की कि जो छोटे अकाउंट हैं जो $105 का 119 का 3000 को अब ब्रेक करें ना. मैंने 20 दिन में 3000 बनाना है. एक गोल सेट करें. अब मैं कैसे बनाऊं जी? 20 दिन में 3000 को डिवाइड करते हैं रोज का. हाँ, ये $150 एवरेज है दिन. किसी दिन अच्छा छक्का लग जाता है कि चलो जी 400 बन गया, तो फिर अगले दिन 100 का. तो आप 150 का टारगेट लेके आए, कोई अच्छा एरिया आए, रात को आए, सुबह आए, ट्रेड डाला. जिस तरह आपने कहा आज मैंने 72 लिया, मेरे से 72 मिस हो गया क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था. 72 आपने लिया और नीचे आई अपने 150 200 5 पॉइंट 4 पॉइंट ले. तो रोज का 3 पॉइंट का टारगेट है एंड यू कैन बी डन. इसमें ये आप कह रहे हैं कैरी ओवर करने हैं. कैरी ओवर, हाँ जी, अगले महीने के लिए ना पर 1300 अगर आप ये $119 पे होगा, कैरी ओवर हो जाए. लेकिन उसके बाद ये इसका पीए की फीस नहीं है.
ठीक है फिर, लेकिन आपने अब 220 दे दिए ना, तो कैरी ओवर की फीस नहीं। हाँ जी। सर इसमें 1500 वाला भी ऑप्शन है? हाँ 15, वो 104 का है, तो उसमें आपके पास थोड़ा सा बफर भी 1500 का। अच्छा, वो आपको फिर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मीनिंग आप मिनी माइक्रो इसी करो, ये 1500 बड़ा हो जाता है मिनी करने के, यहाँ पर फिर चले आप कहते हैं मैं मिनी कर लेता हूँ, $2000 का बफर होता है आपके, वो $500 एक्स्ट्रा है ना, कितना $10 में। सेम सिस्टम है सर, जैसे बुलरॉक्स वगैरह के अकाउंट? सब कुछ सेम है यार, 100 ES करे, NQ करे, MNQ करे, MES करे, they don't care. All they care about is make 3000, don't lose 3000, 2000, 1500। बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं, 1500 से ज्यादा ना बनाएं, 4:30 बजे सारी पोजीशंस क्लोज कर दें और 5 दिन से पहले ना बनाएं। ये आपकी कर, तो दूसरे राउंड में हमने पैसे वी गोना मेक द मनी। यहाँ गेम बहुत अच्छी हो जाती है जो लोग इस कंपनी के राउंड 2 में चले जाते हैं। The where it makes all the sense is round number 2. Again, your account is given 50,000 and 2,000. This is round 2, by the way. If you went to 0, round 2 इसका easy है, आपने सिर्फ 2000 बनाना है। जैसे ही 2 बना लिया, उसके अगले दिन जितने पैसे अकाउंट में आप निकाल लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। Do they have like 5 days? No, एक दिन में कर ले, एक दिन में कर ले। तो इन्होंने तो 2500 में कितने बनाने? 2500 वाले अकाउंट में 1500, 25,000 वाले 1500 बना ले। So this is round 2. Start with 50,000. Don't lose 2,000. There is no time limit. You can do this in 1 day or 10 days or 20 days or there's no daily limit. You can make the whole 2,000 in 1 day. आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं उधर आ जाएं, स्लो ट्रेडर हैं 150, 200। आज मेरे भाई ने पहली दफा, आज उनका पहला अकाउंट था, कल उन्होंने, वो आए थे ऑलमोस्ट 2.5 माह पहले, वीडियो भी हमने डाली थी, वापस गए, 1-2 लो अकाउंट करने के बाद समझ आ गया भाई ये काम स्लो वाला ही है, तेज नहीं है, तो उन्होंने अपने वो फिनिश किए 5 अकाउंट टेक प्रॉफिट के कॉपियर के साथ, और आज उनका डे नंबर 1 था, मीनिंग के उन्होंने थोड़े से ट्रेड डाले, अगर $50 भी मेरे लिए बहुत है, मैंने सिर्फ 2000 तक पहुंचना है ना, 2000 पहुंच गए तो उसके बाद डेली पे आउट, रोज के $50 एक अकाउंट में डालेंगे, 5 अकाउंट है, $250 शाम को निकाल लेंगे एवरी डे। So if your account is rolled over to the next month, Yes. 1300. तो वो वहीं से चलेगा, 13 से शुरू, नहीं, yes, you can roll over your EA in no PA fees, just EA fee. So ये है take profit in That's a very good thing. I think this is the only funding company. आहिस्ता आहिस्ता बेटर हो रही हैं। आप देखें, जब हमने 2.5 साल पहले किया था, एक बेचारी एपेक्स होती थी, इसमें थोड़ी सी बेहतर हो रही है। वो क्योंकि उन्होंने देख लिया बिजनेस उधर जा रहा है सारा, तो सबसे ज्यादा इस वक्त नंबर 1 रेटेड में ये आ गई है, क्योंकि हमारे पास रैंकिंग्स आ जाती है ना, तो इस वक्त ये नंबर 1 पे है, पर्डिया नंबर 2 पे, और 3rd पे आ रही है बुलनॉक्स, 3rd पे बुलनॉक्स आ रहा है। पर्डिया का सब एक अकाउंट ले सकते हैं। पर्डिया का एक है, क्योंकि वो महंगे अकाउंट है और वो डे 1 से आपको पे कर रहे हैं, मीनिंग कि वो लाइव अकाउंट है, सेमी। पर्टिया का कितना लिमिट है सर पर्डिया को नहीं ले सकते, नहीं, मतलब आपने कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड तो होगा ना कि आपने इतना बनाना है बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग द पे ऑफ 3000, तो वो आपने एक दिन में बनानी है, आप नहीं, वो 10 दिन से पहले नहीं देते हैं। हां, तो मीन दैट्स 10 days, right? एंड देन यू कैन स्टार्ट विड्रॉइंग, You can withdraw the whole 3,000 too. They don't care. Just go. तो पहले दिन बट टू से कीप द अकाउंट एक्टिव हाउ मच मिनिमम यू शुड लीव इन दैट? 1500 बहुत होता है यार। बेटे मेरे ने उसको 2000 बनाया, 1500 छोड़ दिया, 500 निकाल लिया जो अपनी फीस पे की थी। So, इसमें भी जिस दिन आपने 750 का लिया और 10 दिन बाद 500 2000 नहीं, 10 दिन नहीं, 10 दिन के बाद आप जो 750 जिसने लिया उसको 3000 बनाने, आपने 3000 बनाए, उसमें से 750 निकाल लिए, तो 2350 का अकाउंट खुला रहा ना मेरा। आपने एग्रेसिव खेल दिया मेरी तरह और उसको ले गए 7000 पे, और 7000 पूरा विड्रॉ कर दिया और अकाउंट बंद कर दिया। तो अब मैं आज भी जो 25,000 वाला है ना, उसका मेरा आज चौथा पे आउट रिक्वेस्ट होगा, $350।
So live threshold, they don't have it. They have it round 2 सारों में है, लेजेंड में भी है, उसमें भी है, तो आपको लाइव थ्रेशोल्ड सारों में वो जो अगर आपने मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा लिया नहीं हाँ। सबके साथ एक्सेप्ट पर दिया सारों में। ये सब रुक जाता है जब आप ओरिजिनल पे पहुंच जाती हैं। जैसे ही इसमें 2000 कर लिया तो लाइव थ्रेशोल्ड रुक जाता है। अच्छा लाइक आफ्टर अब 25,000 वाले में आपने 1500 कर लिया राउंड 2 में, तो लाइव थ्रेशोल्ड रुक गया ना, वो फिर खत्म हो जाता है चेस करना, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे बुरा वही लगा। कोई बात नहीं, पहले 1500 ही है, कौन सा उन्होंने लाइफ टाइम लाइव थ्रेशोल्ड दिया था। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉइन का बहुत हो रहा है। ये उन चारों के पास शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज लाइन है। वो रेगुलर का रेशो करता है। हाँ ठीक ठीक है, फिर मंडे को शुरू करें लेटर तो सर ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। देखो जिन्ने चार्ट खुलणगे बाकी चीज देखोगे, नैस्डैक नहीं देखो, नैस्डैक सिर्फ वो नंबर देखीदा सर, वो इंपॉसिबल टू वॉच। नहीं ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ 22105 ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੈਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, मतलब पहले ही ऑर्डर लगा रहा हाँ ऑर्डर ला दो या कोल प्राइस आ जाए तो फिर ला दो। सिर्फ नंबर से ट्रेड होगी। यस वांगू नहीं कर सकता। और नहीं सर, शामी 6 तो बात कर सकोगे, अच्छा सवेरे से इम्पॉसिबल, वो 2,000 पॉइंट मूव हो जाती है, आ रही है वो देखिए। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। आगे जी कोई ट्रेड लगा हुआ था जी? हाँ जी हाँ सर देखो 2 ਵਾਰੀ देखो प्राइस 3 ਵਾਰੀ मिड बैंड ਤੇ ਆਈ, 3 ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ बीबीस देखो ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੈਪ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ। हाँ जी सर मिड बैंड ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਾਓ, ਬਾਈ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ हर मिड ग्रीन ते बाय है, रेड ते सेल, इको ही रूल है 18 साल तो। हाँ हर वारी हाँ। अच्छा गैप ट्रेड बाद ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਟਰੀ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਪ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। काफी आ गई थी वापस R1 की तरफ, big swings are coming now। सर वो सर्टिफिकेट का क्या सीन है, आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भेजना होता है उसके लिए? किसको? नहीं सर, ये जब लॉगिन करेंगे इन्होंने अपना आईडी भेजना है और सारी चीज़ें अपलोड करनी है उनके, सारी फंडेड सर्टिफिकेट तो आता है कि मुबारकबाद आता है, आया है अगर आप भेजे मैं अच्छा नहीं, वो देखिए वो पहली दफा अच्छा लगता है, लेकिन जब पिए जाता है ना तो बंदा फिर उसको देख के ना रोता है कि नहीं बिल्कुल है। जिस इकॉनमी से हम लोग आते हैं छोटी छोटी खुशियां चाहिए होती है। देखो यार पास कर लिया जी, फंडेड पास कर लिया नहीं, फिर ये प्रॉफिट में भी रखा करें, लॉसेस लंबे लंबे और प्रॉफिट छोटे छोटे। मैंने 3 अकाउंट उड़ाए हैं, मैं सबके सामने बोलता हूँ और ये बात किसी को सीखना हो समझना हो सुन लो। 3,000 का अकाउंट हाँ कितने में जाके उड़ाया होगा, सोचो। थप्पड़ मारने का मन करता है खुद को। 2,500 पे जाके स्लो हो जाते हैं यार। नहीं हाँ। पता है क्या हुआ, कॉल आ गई एक बिजनेस, अच्छा वो करके वो नैस्डैक ने ऐसे गिराया जैसे लात मारी हो मुझे किसी ने। उसके बाद लेजेंड का एक अकाउंट सर 1100 बना के उड़ाया।
बस जिद, बेवकूफी, सिंपली। तो अगर हम डैनियल के 12,000 स्टूडेंट्स का एक एक का इंटरव्यू करें ना, तो यही मसला है। तो सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है, डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स स्टार की वो जो करते हो ना, वो हमारी हुई वाली कहानी। अच्छा, मुझे ना ये रूल नहीं पता था, ये जो आपने भी बताया कि अगर एक दिन घाटे में जाता हूँ हाँ, तो अगले दिन उसको कवर भी कर सकते हैं सर। देखिए आपको, लगता था वो उतना threshold है। नहीं 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 नहीं, अगर अगले दिन बनाया है तो वो वापस उसको आपको दे देते हैं पैसे। यार ये कि आप कहते हैं, असल में ना मेजोरिटी न्यू ट्रेडर कहता है कल, आज आखिरी दिन है, जितने उठा लो, वरना नहीं। राइट, कितनी देर में क्लियर किया आपको पता है? 3 आवर्स। यस, गुड। 3 आवर्स में खत्म कर दिया था। मैंने कहा, चलो हो गया चेहरा। अच्छा, वो भी एग्रेसिव खेला ना। वो कोई समझदारी नहीं। कोई कॉपियर पे आए ना, कोई अच्छी अगर डील आए तो बता। सर 299 का 129 पे लगा हुआ है कॉपी फॉर लाइवर, जितनी आपकी है, जितनी लाइफ उतनी की लाइफ होगी ना यार। बट हाँ, इसकी लाइफ उतनी है जितनी आपकी। सर मैंने पहले खरीदते थे मैं एपेक्स वाला, अब हम खरीदते हैं फ्लोबॉट। इट्स ए गुड डील। मैंने कि एक दफा आपने पे कर दिया, हमारी सुपर एरियाज पे हमारे पास कस्टम कूपन होते हैं, तो हम 194, तो हाँ एग्जैक्टली, बीपीएस क्या बता बीपीएस। वो 100 का है मंथली। पर वो मंथली है, बीपीएस की कॉस्ट मंथली है। $100 कमाना आसान है, जब 400-500 की रेंज में चले जाते हो ना, वो दिक्कत है। हाँ, 100 रखे ना सर, 100 की टारगेट एवरी डे। सर आपकी बातें सुन के ना दिमाग चलने लग जाता है, जब अकेले बैठ के करते हैं ना, फिर नहीं चलता। टेक केयर जी, एंजॉय। बहुत बड़ी बड़ी स्विंग आ रही है। So, do you make money in micros? पीए माइक्रो, अगर आपने मैक्रो का ऑर्डर लगाया हुआ, आपको वो पैसे पहले मिलेंगे जिसने मिनी लगाया। मैंने भी छुट्टियां चाहिए। ये आज मैं 78 का वेट कर रहा हूँ, या 20,000 जो है उसका वेट कर रहा हूँ। नंबर्स का से Sir, would you make would they give you profit if you're in micro? Yes, the micro, Would they give you micros first? they don't care, माइक्रोस हो मिनीज हो, प्रॉफिट से आ रहा है ना। Which समझ आ गया। हाँ। Thinking of putting like you know how you had this automatic setup? Where it was keep it was 8 ticks behind and it was keep लेकिन आप अगर पाकिस्तान में भी बैठ के, मेरा जो अगेन एरियाज क्यों नहीं करते? सर एरिया से मुझे इतना डर लग रहा है। जो 90% चीज है उससे आपको सबसे ज्यादा डर क्यों लगता है? 90% हम कह रहे हैं कि ये जो नंबर्स देते हैं हम, वो चलते हैं जी। हाँ, फिर मसला क्या है? मुझे समझ आता है कितना रखूं, उसका फ्लेक्सिबिलिटी कितनी रखूं, कौन सी पॉइंट पे रखूं, एग्जैक्टली वो रखूं, क्या करूं? How much if I want to get to 100, how much should be my $100 कमाने के लिए आपको ES या Nasdaq, ES डिवाइडेड बाय 5 माइक्रोन, 5 माइक्रो, तो 4 पॉइंट चाहिए। 4 पॉइंट मुश्किल हो रहे हैं। 5 माइक्रो हों ES के, 5 MES हों, और 4 पॉइंट मिल जाए पूरे दिन में, तो $100 बन जाते हैं। एक ही ट्रेड में? नहीं, एक में हो, 2 में हो, मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ ना। उसको $100 को ब्रेक करें ना, कि मेरा अगर टारगेट 100 से $100 ब्रेक करना है, तो $100 में से यू नीड टू मेक 5 माइक्रो में आपको चाहिए 4 पॉइंट। अगर आपने
पॉइंट 20 टिक्स चाहिए। 20 ticks. अगर आपने $100 है और 3 माइक्रो करने, $15 का एक माइक्रो हुआ, $15 का एक हुआ, तो 100 डिवाइडेड बाय 15, 6 से 7 पॉइंट चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट। I'm just trying to figure out where the ideal situation would be, you know. So remember you were teaching us about this black candle thing in the 1510 chart? 8 में से 10 में से 8 दफा लग जाती थी। Yes. But in 50, the bigger chart, the 3020, वो जरा रिस्की हो जाता है, उसका लॉट साइज, उसका कैंडल बड़ी है 30-20 की। मैंने रखा ही 3 टिक था। ठीक है, तो 3 टिक दे रही है वो। Yeah. The only thing is that उसका वो आती बहुत देर से, मगर जो आती थी even you just gotta make sure that there's enough distance between the mid band and the actual price. कि वो करीब वो तो नहीं देती थी। वही बात है, नकल सब चाहिए। वो मसला नहीं है, इजी स्ट्रेटजी पिक करें। आपने ब्लैक कैंडल को कैलकुलेट करना, एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि उस पॉइंट से 8.5, उस पॉइंट से 4 पॉइंट, और उस दौरान ट्रम्प उड़ जाए तो वो आपका ऑर्डर ही नहीं लग पाता। फिर जब से ट्रम्प आया है, मैंने सारा फोकस फरवरी से एरियाज पे ले गया हूँ। पहले पिछले बाइडन के सारे 4 साल में मिड बैंड चलता है, आप आओ, आपके 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं। अभी भी तंगी नहीं हुई, आज अच्छे मिड बैंड अगर आप देखें, लेकिन एरिया ज़रा जो है ना, जिस तरह वॉलेटाइल मार्केट है, एरियाज इज बेटर, माय रिकमेंडेशन। अगेन फियर क्यों रखती हैं एरियाज के अंदर? जितना happens कि एक टिक से रह जाता है। है ना, आपका एक वो चले रह गया तो रह गया, मिस अब हम दोनों वेट करें, नहीं आया 78, क्या करें? तो ये एरिया वाला जो बैठेगा तो ट्रेड से बाहर लंबा बैठेगा। I have time to wait. I have patience. Just आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन किया? जो हमारे करने नहीं आ रहा मेरे फोन में। उसमें अलर्ट आ जाता है नैस्डैक में 30 पॉइंट पहले और ईएस में 5 पॉइंट पहले के where is the price heading to, तो आप वहां पर अपना ऑर्डर लगा दें। और हाँ जी, Question for the mid-band trade. What's the rationale behind 8.5 ticks up and down or something like so that? that's where the candle changes direction. In the 1510, after 4.7 or 19 ticks, if it has traveled in the other direction, there's a black candle. So that's where we have a rule called 19 tick rule and a 34 tick rule. 8.5 is 34 ticks in 30-20, and 19 ticks is 15.5. So the way to explain this on the board, it would look like this. So let's suppose your price is dropping down. Yeah. These are your red, right? And let's put a number here, 6,000. Okay. These are your candles that are coming down. Where does the black candle in our software begins is you have 6,000. So let's write lower low on this, just so how the software is plotting this. We used to do this a lot, but problem, the market is too volatile these days. So this is your lower low. Okay. Let me shut this down. Next candle starts to go higher. Now we have a green. This distance and this distance is 19 ticks. Okay. So it has calculated 19 ticks. So 6,475. It will form a black candle. So every time you have a higher high, higher low, lower high, it's just keeping constant calculation of 19 ticks. So that's where the 19 rule is.
that every black candle is formed after 19 ticks of a certain price. So so you can pick anything and you will tell you 19 ticks, it has changed the direction. And same for 30-20. After 34 ticks, it has changed the direction. We move inventory only at 15-10. Yeah. So this is just to know because it's not relevant to anything. You just know from which point your candle will get formed. Then you decide either 8.5 or 4.7. Yes, exactly. So where does this trade come in handy? So you say, all right, where do I use this? Okay, there's certain things that you learned and certain things. So how to use this is you normally have a higher high. So price went up to higher high. Price came down to a mid band, let's say a higher low. Then you have something called the lower high. So this trade is called SRES. So this is a lower high. So you have a swing, you have a retrace, you have no extension to the upper side. So from here, you can say, where will the black candle be formed? So you take this number, lower high, minus 4.75. You know where I would be selling my order when the trend is about to change, I will go with it. So the price is right now here, but you want to sell as it changes the direction. So that's called a sell stop. I want to sell, but not now, in future. So the current price is here. So this is one advanced way of trading swing retrace. So a lot of people, when they watch this, they will put their trades right here. And then it's continuously. Normally इसका stop loss कितना होता है? सर नॉर्मली इसका स्टॉप लॉस 19 टिक्स होता है क्योंकि जैसे आपने यहाँ एंटर किया तो 4 टिक्स का प्रॉफिट होगा टीपी और स्टॉप लॉस होगा 19 टिक्स का. ये डेंजरस ट्रेड बन जाता है क्योंकि वो सिर्फ 4 टिक्स का प्रॉफिट है लेकिन 19 का स्टॉप लॉस. तो ये थोड़ा सा ना. So areas में कितना रखना चाहिए स्टॉप लॉस? की वीडियो डैनियल ने भी आपको भेजी होगी, उसमें है कि एटलीस्ट एरिया में आप अपर लिमिट से ऊपर 5 पॉइंट रखें, 5 पॉइंट दूर रखें अपने आप. अगर माइक्रो है तो स्ट्रेस की जरूरत क्या है? माइक्रो इज नॉट गोना किल यू. 1 to 3 बोलते रेशियो होनी चाहिए. नहीं लेकिन आपने उसको थोड़ा सा दूर रखना है. All right, 12:05, so time to shut it down. So यहाँ से मेयर साइड ड्राइव किधर है? I have to double check. Sorry. सारा की तरफ आप रेस्ट की तरफ जाना करें. हाँ मैं वही जाना चाह रही हूँ. मैं समझ नहीं आ रहा जीपीएस साउंड. नहीं आप यहाँ से नीचे ना कहते हैं. अच्छा यहाँ से लेफ्ट. हाँ नहीं लेफ्ट कर दीजिए. मैटिसन में और डिक्सी आएगी. डिक्सी पे आप राइट कर दीजिए. आप ऑल द वे वहाँ से फिर आप देख लीजिए. ये साइड जो है ना वो डिक्सी पे तो आके फिर Yes, absolutely. I remember reading check Apex is 1 day pass. Passing evaluation is what? Go to Apex main website, homepage. Homepage. No, don't look at this. This is old rules. Go on the homepage. They run a promotion, which gets on their main page. 80% off, sir. नहीं यहाँ पर एक ऊपर जाएं जो मेन होम पेज है. नहीं sorry. Apex is 1 day pass. Take care जी. ये पहला पेज है, ये देखें.
Yeah. So it's still orange. It says 80% off. No problem. And 1 day pass, right? ठीक है लेकिन 1 day pass है आपको email आई होगी so Hey, come on, Lisa. है 1 day pass ही है. So 80% off and they have a 1 day pass. So if you check your email from Apex, it will say 80% off and 1 day pass. I'm waiting for it. You know, It's just the promotion right Promotion, now. right? But normally it is 7 days. $89 for the second stage. Oh, Or you pay 120 for the first one. for the first one, I paid 16. Like, No, no. When you pass this, Okay. then you have to pay for the fees. Yeah. They get a promotion that all the accounts, when you pass, it only $89 Oh, okay. to pass. Okay. Like the next stage, yeah? Oh, next year. I haven't reached there yet. I found that's the cheapest one. I don't care. I wait for that. Oh, it's like, yeah. So they had already have 2 times 90% off. Oh yes, they ran a bit of a promotion. But didn't have that $89 per account for the passing. A long time. That is the cheapest one ever. All right. I think they've made the quality of the camera better. Impressive. So आप अपना ऑफिस कैसा चल रहा है? वो मुर्ताज संभाल रहा है. So वो जो दूसरा वाला है, so it's running well. उधर भी बिजी है इसी तरह. Yes. Is there any way where we can see the live stream on Straightaway or like even Ninja? Or we have to just keep a mental. बैठ के ट्रेड पे नॉर्मल स्टॉप लॉस 5 पॉइंट ठीक. हायर हाई से 8.5 पॉइंट. जो भी हायर हाई की वैल्यू होगी उससे 8.5 पॉइंट कैलकुलेट करें तो वो आपको मिड बैंड का स्टॉप लॉस होगा. 8.5 से नीचे वो गिरती जाए तो ब्लैक कैंडल 30-20 में बन जाएगी तो वो जरा फिर रिस्की ट्रेड हो जाता कभी-कभी तो सिर्फ वापस आ जाते हैं. दुख लगता है मुझे. है. इट्स ओके. 15-10 में 8.5. सो वो 5 से ज्यादा नहीं है मैक्सिमम. Areas really works around 8 o'clock in the morning time. Has to 24/7 चलता है. कल परसों का एरिया शाम के 9:30 बजे आए. सो एरिया के लिए आपको फोन पे रेडी रहना है. अब देखिए मैं आपको ये लाइव दिखाता हूँ. ये है जो पूरा रेगुलरली. अब मैं गाड़ी चला रहा था. ये एरियाज ये लाइव स्ट्रीम भी आ रही है बाय द वे. जो हम लोग बोल रहे हैं आपके पास लाइव आ रही है. सुबह 8:30 बजे इसने एक दिखाया कि प्राइस एक्सपेक्टेड हाई की तरफ जा रही है और रेंज है 6078 से 6092. तो अब आपको अलर्ट आ गया कि करंट प्राइस आ गई है 6073. तो आप सेल कर सकती हैं 78 से 792 के दरमियान. तो ये लिया ट्रेडर वेट खोला और वहीं से ट्रेड डाला. तो हाँ फिर साथ वो बल्कि इमेज भी देता है. आपको बताता है कि प्राइस टुवर्ड्स जा रही है या रेड कैंडल है प्रीवियस या ब्लैक कैंडल है. राइट. So जो आपके नंबर्स आते हैं 8 बजे 8:30 बजे. हाँ जी. उसको मैं रेडी हो जाता हूँ कि ये अभी प्राइस 78 पे आएगी ना तो मैं सेल करूँ. इम्पॉसिबल है. 36 पे आ गई है वो. अब देखें ये मिड बैंड किसी ने लिया ना लाइक दिस क्रेजी डन. कोई बात नहीं. So वो जो गैप ट्रेस के मिड बैंड है ना वो वेरी गुड. लेकिन गैप हमें बाद में पता लगता है कि वो गैप हुआ. आपने तो मिड बैंड पे बैठना है. तो मिड बैंड आया ये 9.5 पॉइंट उसने दिए यहाँ से. I have a question with the drawdown. The trading drawdown. Is there any way you can see it? Yeah, on yes. I need the mouse, please. So I don't like to watch it this way. I will close all of these things because they have a full trading platform. Close. I bring to plus, and I care about watching this. And this to drawdown, cash amount, and P&O. There's a dollar P&O. 4 values. So this tells you how much you have, $1,700. Oh, okay. Yeah. And that tells you where the target is. Are you still live or?
बस अभी डिस्कनेक्ट होने जा रहे हैं लाइफ से. Another mid band is coming. Let's see if it passes or fails. Sir, if you can make money in Pakistan, you can make money in पाकिस्तान बेचारा इतना है कि उधर ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज बैन है. कोई फंडेड कंपनी अलाउड नहीं है. but I can do it and आप तो यहाँ की सिटीजन है, तो आपका तो सारा आईडी यहाँ का जाता है. तो जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन बेचारों को सिर्फ क्रिप्टो मिलती है. यस, तो वहाँ पे फ्रॉड भी करते हैं लोग, इसलिए अच्छा तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इनको दिया तो इन्होंने सीएम ही खा जानी है. तो one second. There are certain geopolitical issues, you know. Plus, अगर आप उसको geopolitical issues से देखें, एक कंट्री को जो ग्रो नहीं होने दे रहा, तो वहाँ पर यूएस इनकम जानी शुरू हो जाए, ट्रेडर्स जाने शुरू हो जाए, हेल्थी हो जाए इकॉनमी, तो लोग ठीक हो जाएंगे, लड़ाई खत्म हो जाएगी. तो किसी की लड़ाई उन्होंने यूट्यूब तक बैन कर देते हैं. तो it's nothing that they don't want a nation to grow, right? So that's how they put it. Like आपके ऊपर वो लगाए जाते हैं. सर पढ़ाई जा रहे हैं और जॉब बच्चों के पास 20,000 रुपए की भी नहीं, इतने हालात खराब है. $400 per month पे हायर हो जाता है इंजीनियर. That is scary. मैं आपको मैसेज कर दी, मुझे समझ नहीं आता कैसे जाऊं. अभी इंटरव्यू के लिए नहीं इंटरव्यू यार चले, पता नहीं कैसा चल रहा है वो मुल्क, ग्राउंड पे चल रहा है. ज्यादा मालूम That is area. मुजफ्फर भाई Yes sir. बस सर लगे हुए every day same. आपसे भी मिलना है. No problem. Go. अभी डन हो गया हूँ. Just wrapping it up. जल्दी तो नहीं 12 बजे अब लाइव स्ट्रीम बंद. क्योंकि वो कहते हैं यार आप बिठाते हैं 2 बजे तक, लोग ट्रेड भी 2 बजे तक करते हैं. वो तो कहते हैं 11 बजे बंद कर दिया. सर आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ पर ही रहूँगा, मैं घर से करूँगा. मेरी अपनी ट्रेडिंग इतनी अफेक्ट हो रही है. सर आप 8 बजे खुद बैठे हैं तो 9 बजे तक वहाँ पे अकेले बैठ के निकलेंगे. और एक और सर हल बता दें, बच्चों को कैसे चुप कराएं. क्योंकि बच्चे शोर डालते हैं तो बंदे की ट्रेड ही खराब है. तो बच्चों की बात करें, यहाँ शोर चल रहा था, मेरा एनी डेस्क नहीं चल रहा, फिर ये करता हूँ. ये बच्चे सुन रहे हैं, ये बच्चे मुझे खराब. चॉकलेट दे दें इनको, कर देंगे. No worries. So I'm trying to train more people who can take over. It is on $24. So 83%. But it's not $15. It's slightly more. It's a 50,000 account, right? Yes. So renewal का तो नहीं. Renewal कभी. No. सर मैंने ना कैंसिल करनी चाहिए इसकी सब्सक्रिप्शन प्रॉफिट की.